Hello everyone, welcome back. So we were talking about carcinogenesis, and basically I was not able to take classes for few days. Sorry for that. I had to go somewhere. I had some other familial problem. Something happened in my family. So basically now we'll start with viral oncogenesis today. So we are talking about we were talking about neoplasia, and we had completed basic format of neoplasia. So today we'll do viral oncogenesis. uh, Obviously this slot of 6 p.m. is I think problematic at present, because you might be watching what you call it IPL. So today I think you have a match of Chennai Super Kings and Sunrisers Hyderabad, I feel. So basically many Dhoni fans might be watching this match. So hopefully Dhoni will play great and win this match. Or maybe those who are basically Sunrisers fans, for them also best of luck. So today basically anyway, I want to say it's Unacademy. Unacademy is also sponsoring this tournament. So basically Unacademy has a potential to host this tournament, and it's all because of you all, and plus it obviously this is a very much good marketing strategy. Now basically myself, I am Dr. Anil Sharma, and I have been teaching you pathology. And in pathology I have we had completed basic pathology, most of the part of basic pathology, with some of the parts remaining, which I'll just obviously cover it when the right time comes. Now you can just subscribe to Unacademy. Yes, ये जो क्या बोलते हैं आईपीएल को सब्सक्रिप्शन, आईपीएल का जो एड, इट नीड टू डू दिस एड. ऑब्वियसली इट इज़ फॉर दैट इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप लोगों तक पहुंचने के लिए. ऑब्वियसली इट नीड टू डू दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली इट हैज़ अ वेरी गुड फैकल्टी. ऑब्वियसली it has best teachers in the town, best teachers in town. And obviously in from pathology also I can say ki you have one of the best faculty of pathology teaching in Unacademy. I have seen him teaching. So basically you have best everything about the best in town regarding in Unacademy. So basically regarding other subjects also, so you get some of the, and if you can interact with those teacher, you can have we obviously they divide classes in different way, plus classes, special classes, and obviously some motivational classes and all, and that all classes will obviously help you to get good marks and secure a good rank in basically in your NEET exam, AIIMS PGI, everywhere. Okay, now for there is basically little bit of strategies, different strategy for AIIMS and PGI, and basically AIIMS PGI and what you call it your JIPMER annuals even in NEET. Okay, so all the exams need more or less similar type of thing, but little bit different strategy. Okay, so in AIIMS you need to focus more on basic things. Okay, basic things are always important, but you need to focus on all those things also on such cases where, because AIIMS is a tertiary institute and you will get number of in AIIMS the students over there, even the MBBS students over there, they get to chance to see rarest of the rarest case and the most advanced form of instrument and most advanced form of things. Okay, so just don't ignore rare things, because there the students over there see those things, and hence for them it's very easy thing to approach, or for them it is very easy. The questions which you get in AIIMS, they're actually easy for the those residents or those MBBS students who are doing or who have done their MD from AIIMS. Okay, because they see such things every day. Okay, so basically, so you need not basically be surprised if some questions are like you feel very difficult, but actually that thing is very rare, normal in case of AIIMS. So basically, and you have obviously on Unacademy you have teachers who are from AIIMS. Basically though I myself have also done my MD from AIIMS, so basically they know what kind of stops can be asked from AIIMS. So NEET basically NEET is a bit easier in terms of AIIMS, or NEET basically it looks
it NEET has the responsibility of all India, and basically so all India, so it basically it's a generalized exam. Okay, it gives a generalized exam, so it doesn't ask such questions which are too tough or too easy. Okay, so general questions are asked. So basically for NEET you need to have a very good basic. Okay, and for PGI and JIPMER, so PGI now what I think is if your basics are clear, then one exam you will 100% clear, that is PGI. Okay, so अगर आपका बेसिक एकदम क्लियर है ना, बेसिक बहुत क्लियर है, तो PGI तो 100% होगा, बिकॉज PGI इज वन एग्जाम वेयर luck doesn't matter that much. Okay, so luck doesn't matter that high level, and PGI is one exam where basically your knowledge is actually tested. Okay, knowledge is in AIIMS also. I have seen okay, जैसे कि what I feel is बात ज़्यादा हो रही है but simple सा और ठीक है कि what I feel is basically in AIIMS also I have seen भगवान कोटा. Okay, so there is I have seen people who those who have just ticked वही like 200 लगा दिया और उनका हो गया है किसी ना किसी ब्रांच में. आई हैव सीन. ओके, नॉलेज बेस में इतना अच्छे नहीं है. सो ये है भगवान कोटा. ठीक है, ये भगवान कोटा हमेशा होता है एग्ज़ाम्स में. आप ये देख लो, भगवान कोटा होता है. ये एक कोटा और जोड़ लो, है ना, तो बहुत सारे कोटे हैं. तो भगवान कोटा भी एक होता है. तो बेसिकली आई फील दिस इज़ द भगवान कोटा, जिससे सिलेक्शन हो जाता है एम्स में, आपके PGI में, एवरीवेयर. सो बेसिकली यू can get this Bhagwan quota at different places, but here what you need to know is that basically that in PGI it's your knowledge. Okay, आपको अगर किसी टॉपिक के बारे में बहुत अच्छा पता है तभी आपका निकलेगा. So basically your basics should be very much clear in case of PGI. And JIPMER is basically you can say something between PGI and NEET and AIIMS. Something between NEET and AIIMS is JIPMER. So that you should remember. Now एक सेकेंड, किसी का कॉल आ रहा था. ठीक है, सो दिस यू शुड नो वेरी वेल. नाउ कमिंग टू द सो टुडे वी विल बी एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू टू subscribe Unacademy. So basically you can use my promo code ANLIV live. Basically it will help you to get 10% discount. Okay, that will be a great deed for you. Basically, and coming to the basically बहुत ज़्यादा बोलता हूँ मैं. Some of you might be teasing me. So basic now before the start of this tournament, let's I'll try to finish this today's class. Okay, IPL 7:30 बजे से होता है, so don't worry, you will get to see your Dhoni's match. So today I'll be teaching you about viral oncogenesis, or basically we'll talk about microbial oncogenesis. Okay, microbial oncogenesis. So we have talked about different things. Okay, we have talked about tumor oncogene, we have talked about tumor suppressor gene, different methods in which tumor oncogenes work or tumor suppressor genes will be working. We have talked about most of the basic things in the neoplasia, and believe me, I have just taught you from Robbins. Okay, Robbins ही cover किया है. Robbins basically is a very very good book. You should follow Robbins. मेरे classes के बाद I don't say I have just मेरे classes wonderful or whatever, but मेरे classes के बाद just go and read Robbins once. भी किताब तो आपको पढ़ना ही, तो रीड रॉबिन्स वंस. बेसिकली यू विल अंडरस्टैंड. बेसिकली व्हाट आई बिलीव इज अंडरस्टैंडिंग. आपको अंडरस्टैंड करना है टॉपिक मैटर, बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है. और जब आपको टॉपिक मैटर अंडरस्टैंड करना है, ट्राई टू टेक एन ईजी बुक. सो नॉट फर्स्ट डोंट रीड रॉबिन्स. पहले रॉबिन्स पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो यू रीड सम अदर Harsmohan type of book. Okay, so they have explained topic matter so beautifully. Then just you can just read, go through my slides also. Okay, my slides I have tried to cover everything about everything in Robbins. Then just go and read Robbins. Okay, जब हम आप जैसे कि MBBS का प्रिपरेशन कर रहे थे वहाँ पे आपको क्या बोला जाता था, NCERT. ओके, NCERT इज़ द बेसिक बुक, और NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ो. 4 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, लेकिन उसको पढ़ो, और हर बार पढ़ोगे यू विल अंडरस्टैंड इट डिफरेंट वे. एंड रॉबिन्स हैज़ ऑल्सो सेम थिंग, यू विल अंडरस्टैंड इट डिफरेंट वे. एंड बिलीव मी, लास्ट में इवन MDs ऑल्सो एग्जाम में रॉबिन्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, सो रॉबिन्स इज बेसिक. सो विल डू माइक्रोबियल ऑन्कोजीन, एंड इन रॉबिन्स
बेसिकली आपके लिए स्टफ बनाते हुए आई ऑल्सो रीड सो मेनी बुक्स, मैं बहुत बुक्स से निकालने की कोशिश करता हूँ, बहुत बुक्स से स्टफ्स लेता हूँ, लेकिन फाइनली व्हाट आई फील इज रॉबिन्स इज बेस्ट, रॉबिन्स में ही सब कुछ अच्छा दे रखा है. सो जस्ट लर्न दैट बुक और बेसिकली आई एम टीचिंग फ्रॉम दैट बुक ओनली most of the things. So this is an introduction part, you know very well about virus and all. So ये जैसे कि अब क्लास शुरू करने के लिए एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, nothing more important in this slide. Okay, so virus which can have a DNA, RNA. Okay, it can have a protein code like capsid. Okay, so basically each viral particle of viron will consist of this all things. So each virus have a particle, each particle that is known as virion. Okay, the capsid shape varies. So capsid का shape अलग अलग का होता है, like it can be icosahedral, polyhedral or helical. Okay, so it can be of different type and two more complex structure, tail or even envelope भी हो सकता है. ठीक है, इसमें so virus they are enveloped, non-enveloped virus. So viruses basically इट्स अ सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट. नथिंग मोर इन दिस स्लाइड, कुछ ज़्यादा नहीं है इस स्लाइड को ज़्यादा फोकस करने की, जस्ट ये इंट्रोडक्शन पार्ट है. सो नाउ दिस इज बेसिकली अगेन हाउ वी क्लासीफाई वायरस. सो वायरस को वी क्लासीफाई अपॉन 7 क्लासेस में, लाइक डबल स्टैंडर्ड DNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड RNA, पॉजिटिव स्ट्रैंड सेंस, सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव स्ट्रैंड सेंस, सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस, RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरस और DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरस. सो दिस आर डिफरेंट 7 कैटेगरीज ऑफ वायरस विच वी कैन डिफाइन इन द वायरस. सो बेसिकली ये क्लासिफिकेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है. यू कैन गो थ्रू दिस क्लासिफिकेशन, यू कैन जस्ट गो टू योर माइक्रोबायोलॉजी नाउ. एंड बेसिकली मैं और क्या चाहता हूँ, आपका सबसे अच्छा वे ऑफ पढ़ने का है, आप इंटीग्रेट करो. ठीक है, इंटीग्रेट करो, हर एक सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करो. ओके, इस सब्जेक्ट को उस सब्जेक्ट से इंटीग्रेट करो, हर चीज़ को इंटीग्रेट जब करोगे सो बेसिकली यू विल बी अ कंप्लीट बैट्समैन. ठीक है, और अ बॉलर कभी स्लो सिर्फ फास्ट बॉलर रही नहीं कि हमेशा फास्ट बॉलिंग ही करता है. सो बेसिकली यू नीड टू इंटीग्रेट. ओके, एवरीथिंग, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, ये सब इस चीज़ को माइक्रोबायोलॉजी से इंटीग्रेट करो, इनके एग्जांपल्स पढ़ो. ठीक है, सो रीड एग्जांपल्स अबाउट ऑल दिस वायरसेस एंड बेसिकली दे कैन बी आस्क्ड इन सिंपल एग्जाम में. क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस, नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस. सो इन सब का एग्जाम्पल्स माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ो. यू नीड टू, सो वॉट एवर जस्ट इंटीग्रेट, और सो आपका सब कुछ एक ही साथ कवर होता जाएगा फिर. So basically these are example of common virus. See, so this is the double standard DNA virus where we will talk about herpes, pox, adeno, papilloma virus. So for our concern is basically will be basically this papilloma virus. here see this is non envelope. so here in this इस टेबल से भी क्वेश्चन आता है. ठीक है, सो डोंट स्किप. एग्जाम का दूसरा फंडामेंटल चीज़ है कि एवरी स्लाइड एवरीथिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपका इस टेबल से भी 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दिख जाएगा. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक ऐसे सर पॉजिटिव स्ट्रैंड एंड सिंगल स्टैंडर्ड RNA है ना, कौन सा है, अथवा नेगेटिव स्टैंड सिंगल स्टैंडर्ड RNA कौन सा. सर सी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हेपेटाइटिस C वायरस. ओके, हेपेटाइटिस C वायरस ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, किस में आता है ऑब्वियसली. सी, ओके, very important. So now you need to know. And similarly single stranded, double stranded DNA, double stranded RNA, single stranded RNA and double stranded RNA. So single stranded RNA positive strand, negative strand. So influenza virus. So you need to know this. And even यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनवेलप किन किन में है, इनवेलप किस किस में नहीं है बोल के. ओके, सो इनवेलप है कि नहीं है. सो दिस आर वेरी इजी क्वेश्चन आपके लिए है ना, बहुत इजी क्वेश्चन, और कभी कभी एग्जामिनर पूछ सकता है. ठीक है, यू डोंट नो अबाउट द मूड ऑफ एग्जामिनर. ओके, सो रिमेंबर हेपेटाइटिस B वायरस, इट्स अ रिवर्स DNA वायरस. रिमेंबर, तो बेसिकली यू नीड टू नो दिस. ये सब MCQ पूछा जा सकता है. ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो इस टेबल से भी बन सकता है. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, हमारा कंसर्न वायरस से रिलेटेड नहीं है और टाइप्स ऑफ वायरस एंड ऑल. सो आई एम नॉट टीचिंग यू माइक्रोबायोलॉजी, बट या दिस इज इम्पॉर्टेंट important topic and you need to know about this all thing. Okay, so basically now coming to the this again introductory class to the cancer. So we know by now, we know very well that cancer, obviously because of uncontrolled disruption of normal restraints of cellular proliferation. So this also no need to focus that much in this slide. So basically this is talking about cancer, how your neoplasia is occurring, what all things can happen in neoplasia in short. Nothing to wonder in this in this slide. There is nothing new.
So now you can remember this slide. So some facts about this topic. So the first tumor virus which was discovered was basically avian rose sarcoma virus. Okay, so RSV, what you know is avian rose sarcoma virus. So this is the first basically virus which was discovered, or first tumor virus which was discovered, but it was not in human, it was in avian, so it was named as avian. Now first human tumor virus discovered was basically Burkitt's lymphoma, and it is Epstein-Barr virus. Okay, EBV. So it was associated with Burkitt lymphoma, and it is the first human tumor virus which is discovered. So very important. Okay, this can be your MCQ. So this एक क्वेश्चन हमारा बन गया, ठीक है याद करने के लिए. नाउ रिमेंबर ह्यूमन एडिनो वायरस का एक अच्छा खासा है, ये एक फर्स्ट वायरस है जिसमें ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी है बोल के डिस्कवर्ड हुआ था, लेकिन अभी तक कोई ठोस देयर इज नथिंग लाइक कि या दिस ट्यूमर इज कॉज बाय एडिनो वायरस, वो अभी ह्यूमन कैंसर अभी तक पता नहीं चला है, बट सी ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी सबसे पहले एडिनो वायरस में पता चला था. नाउ दिस कैन बी ऑल्सो एन एमसीक्यू, आपके पास एडिनो वायरस के द्वारा कॉज्ड, यू आर नॉट नोइंग द कैंसर स्पेसिफिकली, यस दे कॉल, जैसे मेसोथेलियोमा दैट इज कॉज्ड बाय एडिनो वायरस, एडिनो वायरस माइट बी इन्वॉल्व्ड इन मेसोथेलियोमा, इट इज सेड, बट it has not any true significant studies related which prove that yes it is causing 100%. Okay, but see oncogenic property first was discovered in adenovirus. So this is another MCQ. So remember human STLB responsible for adult T cell leukemia, so or lymphoma. This is the first human tumor in the retrovirus family. Okay, so it is in the retrovirus family. This STLB is responsible. So STLB1 and STLB2. So the retrovirus family. So this is the first in retrovirus family. Okay, not overall, but in retrovirus. So if you are asked in retrovirus, obviously this is your MCQ. So you can remember these factual things. Very importantly, historical things in case of virus. Now next thing which we want to know is basically ट्रांसफॉर्मेशन. सो कौन से प्रोसेस से क्या होता है बोल के. सो बेसिकली अगेन यू नीड टू गो टू योर माइक्रोबायोलॉजी, यू नीड टू नो अबाउट समथिंग अबाउट योर माइक्रोबायोलॉजी. ओके, सो माइक्रोबायोलॉजी में कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, ट्रांसडक्शन, सो डिफरेंट प्रॉपर्टी है. सो वायरस बेसिकली जो मैलिग्नेंसी है दैट इज मोर और बेसिक प्रिंसिपल इज ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन इज बेसिकली नथिंग बट इट्स इफ अ वायरस it goes in to another cell, that is take up a resistance in the cell that alters the property of that cell, the cell is said to be transformed. Okay, so कोई भी सेल के अंदर अगर वायरस जाता है, एक सेल है, इस वजह से इस वायरस, इस सेल का ये DNA है, वायरस DNA है, ये अगर वायरस इस सेल में जाकर रिसाइड हो जाता है, इस सेल में जाकर रिसाइड हो जाता है और इस सेल की प्रॉपर्टी चेंज कर देता है, इफ इट इज चेंजिंग दैट इज नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, so basically they will change the biological property of a cell. Okay, so now since biological property of the cells are changed, so what they will do, they will result in the regulation of the cell, and the cell of ye viral gene will start regulating this genome. Okay, so basically what does transformation do? Transformation will result in loss of growth control. So now the growth control is not with the cell, it is with the viral DNA, basically viral genes, and obviously encourage independent growth. So they will result in encourage independent growth. They will result ability to invade extracellular matrix. So the ability to invade extracellular matrix will increase. Now what you need to know is basically dedifferentiation and immortalization. They will result into dedifferentiation and immortalization. Remember these are very simple things. Okay, ये क्या है, आपको ट्यूमर बनाना है, ठीक है, आपको एक ट्यूमर बनाना है. ट्यूमर बनाने के लिए सेल को क्या करना पड़ेगा, इसको इमोर्टल बनाना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएशन करते रहना पड़ेगा. तो बेसिकली इमोर्टल एंड डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, इसके अराउंड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. ओके, एंड देयर इज ग्रोथ कंट्रोल इज लॉस, देयर इज लॉस ऑफ ग्रोथ कंट्रोल. सो इट इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, नथिंग इज कंट्रोलिंग दिस ग्रोथ ऑफ दिस ट्यूमर. सो सिंपल थिंग है ना, ट्यूमर बनाने के लिए बेसिक पॉइंट क्या क्या चाहिए और उन पॉइंट को क्या क्या बढ़ा सकता है, व्हाट दैट इज व्हाट ऑल अबाउट कैंसर. ओके, विल टॉक अबाउट इन ऑन्कोजेनेसिस, वायरल ऑन्कोजेनेसिस, सेम थिंग. ओके, so now basically here see this is transfer cell, they result into the chromosomal aberration, and this chromosomal aberration can be attained by integration. Okay, now we'll talk about integration. Basically again you need to know about
योर माइक्रोबायोलॉजी पार्ट कि इंटीग्रेशन एंड एपिसोमल पार्ट एंड इंटीग्रेशन पार्ट क्या होता है, ठीक है. सो एक इंटीग्रेशन होता है, एक एपिसोमल पार्ट होता है, ठीक है. विल टॉक अबाउट दैट. सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी इंटीग्रेटेड, यानी कि डीएनए जो वायरस डीएनए दैट और वायरस जीन इज गोइंग एंड इंटीग्रेटिंग इन द होस्ट जीन, ओके, दैट इज इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन इट कैन मस्टली इंटीग्रेटेड वे से ही जाएगा, सो दैट इंटीग्रेशन विल रिजल्ट इनटू डिस्ट्रक्शन ऑफ द डीएनए ऑफ दैट होस्ट डीएनए को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है. सो so basically yeah, you're not going to get any specific question over here. या in microbiology point of view से यहाँ से question बन सकता है. Please transformation microbiology में पढ़ लेना. Yeah, these are the 4 points where you can get MCQ regarding these 4 points, okay. So which of the following is not related to the transformation, okay, is not related to transformation, and they can change everywhere, okay, they can change somewhere. So they can change in any of these 4 material and they can ask you. So this way they can form this question. Other there's not a specific, there's not a nothing specific can be asked here. So now what you need to know is there are obviously 2 classes of gene in which altered expression can lead to loss of growth of control. Basically one that is oncogene and another is tumor suppressor gene, okay. So whenever there is altered in oncogene basically they are the class of genes which will responsible for the formation of tumor cells, okay. So these genes are stimulatory for growth and which cause cancer when hyperactive. Mutation in the gene will be dominant, and there is anti-oncogenes, or we call it tumor suppressor gene, and there is obviously inhibition of this tumor suppressor gene will also result in tumor. So these are basically, and whenever the mutation in this gene will be recessive, okay. So mutation in this gene is recessive and mutation in this gene is dominant. So now this is again an MCQ for you, okay. Now what you need to know more is about same thing, integration का part है कि the region of viral genome, that is obviously DNA in case of DNA tumor virus or RNA in case of RNA tumor virus that can cause tumor is called oncogene, okay. So this foreign gene can be carried into cell by the virus and the host cell to take a new properties. So the host cell now will take the new properties. So discovery of viral oncogene in retrovirus led to the finding that they are not unique to the viruses, and बेसिकली ऑन्कोजीन वायरस में प्रेजेंट होता है, एंड बेसिकली ये भी जरूरी नहीं है कि दे आर द यूनिक टाइप ऑफ वायरसेस, ओके. दे बेसिकली दे आर यूनिक वायरसेस एंड देयर आर प्रोटो ऑन्कोजीन भी होते हैं सेल्स में, ठीक है. सो ऑन्कोजीन के केस में वन आइदर वायरस से ऑन्कोजीन जाके ये होस्ट सेल को इफेक्ट करके ट्यूमर कर रहा है, ठीक है, या दिस वायरस इज गोइंग एंड चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटोऑन्कोजीन्स जो कि हर सेल में होता है, ठीक है, प्रोटोऑन्कोजीन्स को जाके इफेक्ट करता है, ठीक है. सो देयर आर 2 मेथड्स, these are 2 methods. One, virus either is directly taking the oncogenes to the host and obviously they are affecting the host, or either the proto-oncogenes they are going into the virus and they are changing or resulting in the virus, okay. So this is basically the 2 processes in which the virus will change or bring about change by the help of oncogene and proto-oncogenes, ठीक है. So this same thing, this slide is saying nothing new about all this what I said. This is, and now these are different types of virus. So here this table has a little bit of importance in case of your exam. So basically what you can know is, suppose this HPV virus. So in HPV virus there is a viral oncoprotein. So which of the viral oncoprotein is responsible for tumorigenesis or oncogenesis? It is E6 and E7, okay. So now that is very important. In STLB1, okay, STLB1 what is important? It is TAX. So TAX gene is important. So now that is basically human T cell leukemia virus. So this type 1 human T cell leukemia virus type 1. So TAX is basically important oncoprotein which is responsible for tumor, okay, for tumor. And obviously what does this E6 and E7 will target? Obviously E6 and E7 will degrade P53. They will degrade P53. Now this is another MCQ. So basic pathway is obviously degradation of P53, and in case of STLB the TAX obviously it will stimulate the NF कप्पा भी पाथवे को स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है. सो नाउ दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो, ओके. सो बेसिकली NF कप्पा भी पाथवे को स्टिमुलेट कर देगा. इट विल स्टिमुलेट द PI3K पाथवे, ओके, PI3K AKT पाथवे, ओके. So now we know about all this pathway, we have talked about them. So PI3K pathway को इफेक्ट कर देगा. So basically
you need tax. Okay, tax is an viral oncoprotein produced by STLB. So these are very two important MCQs. There can be in EVV, obviously it is LMP1. Okay, LMP1. So this is again important part where what you need to know about this is basically this is again another MCQ in case of EBV. Okay, now in case of polyoma virus and in case of SB40, so large T antigens and small T antigens, so they are not that important. Okay, so you can keep ये थोड़ा सा बस दिमाग में रख सकते हो. So for these three, these are important things. Okay, so this can be asked in your exam. So this table has this much of importance. You need to know these 3-4 things about this in your exam. Now this is really this list is talking about those virus family and what type of tumor they cause. So adenovirus, since adenovirus they don't have till now that it has not been developed actually which cancer it causes. So mesothelioma they say it. Okay, the cofactors are asbestos and others, but it has not been proved. Okay, flavivirus, in case of flavivirus family, HCB. Okay, HCB is very important. Okay, HCB positive strand single stranded RNA HCB. So you need to know HCB क्या है बोल के, negative strand है या positive strand है. So it cause hepatocellular carcinoma. This is an MCQ. Now HBB, so hepatinovirus. So HBB, this also cause hepatocellular carcinoma, and there is a query of pancreas. Okay, so now this is also should be associated with aflatoxin, alcohol, and smoking. Okay, so these are the some other risk factors you can say which are responsible along with hepatitis V virus which will be causing this hepatocellular carcinoma. Now in herpes virus, or we call it HSV4 or Epstein-Barr virus, so इसको HSV4 भी कहते हैं ना, HSV4. So very Epstein-Barr virus. So what they will be causing? They will be causing Burkitt's lymphoma, and the cofactor, remember cofactor is basically here. The cofactor basically here is malaria. Okay, so malaria है तो बर्किट लिम्फोमा का होने का चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड देन यू हैव इम्यूनोब्लास्टिक लिम्फोमास. ओके, बी सेल लिम्फोमास ज़्यादातर होता है. देन अदर इज नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, हॉजकिंस डिजीज, लियोमायोसार्कोमा एंड गैस्ट्रिक कैंसर. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट. दिस आर द ऑल द लिम्फोमास एंड कैंसर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल विच आर एसोसिएटेड विद ईबीवी. ओके, ईबीवी के साथ एसोसिएट होता है. हम बहुत सारे बात पढ़ते हैं, हॉजकिंस डिजीज में भी पढ़ेंगे. ओके, विल टॉक अबाउट इन नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा आल्सो, इन बर्किट्स लिम्फोमा आल्सो विल टॉक अबाउट, लियोमायोसार्कोमा एंड गैस्ट्रिक कैंसर आल्सो विल टॉक अबाउट देयर ईबीवी. In individual cancers अब पढ़ेंगे तब भी, and here we will just talk about EBV. So this is because this gives us a very good opportunity to talk about EBV, क्योंकि EBV से direct questions भी आ सकते हैं. ठीक है, या basically those students who are preparing for their final term exam or those who are in first year, second year vivas and all, for that teachers very much like to ask about EBV, HPV. So you need to know about this. Okay, so now here this again is a very good MCQ. So the associated condition for with Burkitt's lymphoma or the associated condition with EBV के अलावा the associated condition is malaria in case of Burkitt lymphoma, यानी कि मलेरिया में ज़्यादा चांसेस होता है Burkitt lymphoma होने का. Okay, then here immunodeficiency, nitrosamines, HLA genotypes. Very good. Now HSV8, again this is an Huffy virus, and this is associated with Kaposi sarcoma, body cavity based lymphoma and Castleman's disease. Okay, Castleman disease, now it is basically ये lymphoproliferative disorders में basically ये tumor से basically some people this they classify it outside of the tumor. They don't classify as tumor. They classify it as a benign disorder. Okay, all are associated with cofactor HIV infection. Then you have a papilloma virus. So papilloma virus, now we know very well high risk and low risk wala papillomavirus. So basically you have what you have is papillomavirus like 16 and 18. They will be causing like anogenital cancers and some upper respiratory cancers, and 5, 8 and 17 basically will cause skin cancer. And obviously associated factors will be smoking and other factors. Here obviously skin will be sunlight, immune suppressions. Okay, now what you need, another is polyoma virus. So remember polyoma virus basically there again the perfectly it's not known. Okay, but yeah, they can cause brain tumor, insuloma and mesotheliomas. And very important polyoma virus is JCBK. Nowadays we have Merkel cell polyoma virus also, which is causing Merkel cell carcinoma. Yeah, very important. And ये जो simian virus 40, this is also responsible, this is also type of polyoma virus.
Now retrovirus, we have talked about STLB1 and STLB2. So STLB1, by now you know that it's causing adult T cell leukemia or lymphoma, ATLL, what we call it, ATLL, adult T cell leukemia or lymphoma, and obviously STLB2, which is associated with hairy cell leukemia. So now this also again can be an MCQ. Okay, so you need to know these all are simple things. You can't do mistake in these all things. Okay, they are very very important in case of so these are the actually ये टेबल भी आपको याद है, and if you remember this table your 100% you are going to solve a question. Okay, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय EBV या HPV एसोसिएटेड ट्यूमर कौन सा है, हेपेटाइटिस बी और सी तो ऑब्वियसली बच्चे को पता होता है. सो मोर कन्फ्यूजन विल बी विथ EBV, HBV एंड बेसिकली HPV. Okay, and polyomavirus. So now basically now coming to the viruses, we know very well DNA virus and RNA virus, retrovirus. So this is a broad classification, and we'll talk about this broad classification लेने कि कौन सा virus कौन सा organism क्या करवा रहा है. ठीक है, so that is where we'll be concerned about. ठीक है, sorry. Now firstly, what is the mechanism of virus induced neoplasm? So basically there can be two mechanism, one indirect mechanism, one direct mechanism. Okay, so one that is basically indirect mechanism. In that indirect mechanism, basically what there will be suppression of the host immune system. So your host immune system will be suppressed, and this host immune system, when it is suppressed, we know very well it will lead to impair of elimination of the tumor. Now stimulation of cell proliferation leading to increased target of other neoplastic changes. So there will be tissue regeneration after injury, mutagenesis of immune component of other cells. Okay, there can be mutations, tissue regeneration. So these are some of the indirect mechanism by which you can form a tumor. Okay, by the viruses. Direct mechanism, that is Salman Khan hit and run case. Okay, so basically here in this no crucial virus gene or structure whose persistence is essential. So basically like Epstein virus in Burkitt lymphoma. So in Burkitt lymphoma it doesn't, Epstein virus doesn't need its Epstein virus के कुछ components होते हैं, so it doesn't need its crucial components. Okay, so that is what Epstein virus. So basically so this is hit and run case type of thing. Okay, so basically these are the Salman Khans. So herpes virus, they don't need any crucial virus gene, so you don't need any virus gene to enter into the cell, but basically they can just infect the cell, and by infection only they can cause this tumor. Okay, so we'll talk about this EBV, how EBV causing Burkitt's lymphoma. Crucial part of viral gene persists in the tumor cell. Now virus carries a gene whose product directly or indirectly initiate or maintain neoplasm. Insertional mutagenesis, viral DNA inserted in the host chromosome augments or destroy normal gene expression. Okay, so basically it doesn't need in this no crucial virus gene is needed, but basically very once something is like कुछ infection या कुछ शुरू कर देता, उसके बाद the crucial part of the tumor cells can be seen in that virus, and they can be resulting in the proliferation and growth. Okay, and hence tumor can occur. So this is what a direct mechanism is. Now as I said, cell transformation is basically the major mechanism or basic mechanism for occurrence of what we call it tumor oncogenesis by the virus. Okay, so viral DNA integrate. So basically here I say integration into the cell genome occurs only rarely, and this is the not in the normal part of viral life cycle. So the integration occurs very rarely, and hence that rare cases can cause tumor. So here the figure A is showing this is your viral DNA. So see, viral DNA, this is integrating, viral DNA is integrating into the cell DNA, and hence that integration, because of this integration, it will destabilize the cellular genome, and this will activate the adjacent cellular gene, and hence see there will be cell DNA damage, and cell oncogene will be growth of the cell oncogene can occur. Okay, so this is the method of transformation. So now we go to DNA tumor viruses, which are so we'll talk firstly about the DNA viruses. Okay, DNA viruses which are responsible for causing human cancer. Okay, so the first DNA virus, so basically first DNA virus which was associated with formation or which was discovered for the tumor was
rabbit fibroma virus, and which was discovered by Soap, and also papilloma virus. So both were discovered by Richard Soap. Okay, so papillomas basically they are warts. Okay, so they are the warts, benign things which is occurring in the epithelium of different places. So it can occur in mucosa, so wherever there is mucosal lining, so there you can see papillomas. Okay, papillomas in intestine, papillomas in cervical region. Okay, so you can see in the mucosal lining. So it's a basically benign growth, or it is a wart of epithelial cells. Okay, so basically they were, how they were discovered not so important point, so इतना important नहीं है, just for the basic information के लिए है कि ये wild rabbit से निकाला गया था. ठीक है, discovered in wild rabbit, and they were then अगर wild rabbit में inject किया गया, so it produced benign papilloma, but whenever it was injected in domestic, okay, in the domestic rabbit, so domestic rabbit it means you are saying mutated. Okay, डोमेस्टिक कहने का मतलब म्यूटेटेड में, सो म्यूटेटेड हो गया, तो जब म्यूटेड हो गया ये कार्सिनोमा कर लिया. ओके, रिजल्टिंग इन मैलिग्नेंट ग्रोथ. So we'll talk firstly about the papilloma virus. So papilloma virus basically the genome size and all not so important, basically 8 kilobase का होता है. So they cause wart and also human and animal cancers. Okay, so very important, warts and cancers करा सकते हैं. So warts they are usually benign but can be converted into malignant conditions, and this basically occur in the person with epidermodysplasia verruciformis. Now what is this epidermodysplasia verruciformis? So it is also known as Lewandowski-Lutz dysplasia. Now you can be asked in exam, okay, which of the following is Lewandowski-Lutz dysplasia? Very important. Okay, so then it is a autosomal recessive mutation. Abnormal uncontrolled papilloma virus replication will be seen in this. Obviously the skin will be scaly, macules and papules on many parts, and it is associated with high risk of skin carcinoma, basically by 5 and 8. Okay, so now skin tumor, we have already talked about 5 and 8 HPV type will cause this tumor. Okay, so now coming to the HPV and carcinogenesis, or what are the cofactor. So smoking, it can be a cofactor, very important. So can cause cervical and head and neck tumor. Okay, so HPV head and neck भी कराता है, और obviously cervical cancer. These are two major जगह पे जहाँ पे we will talk about HPV. Okay, so smokeless tobacco can also cause head and neck. Alcohol can result into head and neck. So these are the associated factor. Okay, co-factor for कार्सिनोजेनेसिस HPV के साथ साथ ये को फैक्टर्स का भी ज़रूरत होता है, so that you will be getting so that obviously resulting in cervical or head and neck cancer. So whatever the conditions, so these are some of the conditions or spectrum of disease which are caused by HPV. Okay, ये जैसे इसोफेगस में जाके इसोफेजल कार्सिनोमा करा सकता है, हेड एंड नेक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्सिनोमा करा है, वैसे नेजोफेरेंजियल वी टॉक्ट अबाउट नेजोफेरेंजियल. एनल कार्सिनोमा करा सकता है, वेजाइनल में करा सकता है, कोई सर्वाइकल वल्वर रीजन में एंड पेनिस में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इसका. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस आर द प्लेसेस वेयर योर HPV कैन बी इन्वॉल्व. सो दिस टॉपिक बेसिकली आई एम डीलिंग मोर अबाउट HPV एंड EBV, कैसे ट्यूमर करा सकते हैं और क्या क्या ट्यूमर्स करा सकते हैं. ओके, सो यू माइट और मस्ट हैव द टाइम यू गेट वन क्वेश्चन रिगार्डिंग HPV एंड EBV इन योर एग्जाम्स. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके रॉबिन्स में भी बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है. सो नाउ HPV बेसिकली इट्स अ पैपोविरिडी फैमिली एंड इट इज आइकोसाहेड्रल and greater than 200 subtypes. Now this is not important in point of view of NEET. You are not going to, or NEET is not going to spoil one question giving such type of things. Okay, by HPV कौन सी family से है, क्या है, yeah. So now where you can get this question, obviously PGI. Okay, in PGI you can get whenever they might be asking about HPV. So when they ask about HPV, and they can give you one option as, so there are more than 200 subtypes of HPV, there are more than 60 subtypes of HPV, more than 70 subtypes of HPV. Okay, so they can give you like this. Okay, so because your Robbins generally says there are more than 70 type of genetically identified. So your Robbins says there are more than 70 types of genetically identified HPV. Okay, so this also you should remember. अगर 70 भी use हुआ है तो you need to remember. Other books they uses more than 200 types HPV are found. Genetically identified are 70 types of genetically identified. Okay. Now coming to the
3-dimensional structure. So basically they have two major things, that is one is capsid protein, okay, one is capsid protein which can be major and minor, that is L1 and L2 यूज किया हुआ है, and obviously there will be viral nucleic acid or DNA, okay, so viral nucleic acid and DNA where there will be early gene products, early products and late products, okay, so we'll talk about this early products and the late products now. So this again saying just structure of what you call it, HPV. So it's a non-enveloped, so this basically what we talk about the structure. So see, this is a structure of HPV. So here you have L1 and L2, you have L1 and L2, so these are the capsid protein, so the major proteins and the minor proteins, and this you have E1 E2, so they are the early proteins, E1 E2 E6 E7, okay, there will be E4 and E5, okay, E4 and E5, so these are all together the early proteins. So remember, in your exams HPV is very very important. They can ask you about the vaccines, they can ask you about the structure, they can ask you so and what are the early proteins or what are this E1 E2 इनका function क्या है, very very important, ठीक है. So यह E6 and E7 ये दोनों क्या है, ये oncoprotein है, these are oncoprotein. See here they will result into degradation of P53 का degradation करेंगे, okay, and obviously E1 and E2 they are responsible for DNA replication. We'll talk about their function subsequently. So now coming to the HPV के बारे में, by now we know it's a double stranded DNA virus, okay, non-enveloped, icosahedral, and belongs to the alpha papilloma virus and Papoviridae family. This much is important in case of this. Now coming to another thing, so it has 3 regions, okay, so this is organized in 3 regions. One is a non-coding locus control region, LCR region, okay, and another there is 2 proteins, that is early proteins and the late proteins, okay, the L and E, L early protein late proteins and E for the early protein region, okay. There are 2 protein coding region and there is one LCR region, that is locus control region, that is non coding region, okay. So basically जैसे coding and non coding region होता है, coding region 2 proteins बनाएगा, early protein and late protein, okay. So this again giving you just example. So ये देखो ये late, okay, late genes हो गया, late protein बनाएगा, and obviously a non-coding region होता है, and they are the early genes, okay. So E1 and E2 they are records of replications and transcription, okay. So E2 have another function, that is it down regulates E6 and E7. important point यहाँ पे हो गया आपका, MCQ बन गया सीधा सीधा, ठीक है. and here E4 basically viral gene, so ये MCQ बन गया. E6 E7 ये अगर हमें भी अब इसको जैसे IPL में ऐड बनाना है तो क्या बनाएंगे, ये बन गया आपका अनअकैडमी MCQ क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना, ऐसे कुछ बोलेंगे. सो ये बन गया आपका MCQ अनअकैडमी MCQ of the day. So E6 and E7 will down regulate E2. Then again viral release will be done by E4. E5 will help it to evade the immune, okay, immune response, immunity को evasion करने में help करेगा E5. E6 and E7 they are both the oncoproteins, okay, so they are both the oncoproteins and they are responsible for resulting into the P53 का डिग्रेडेशन एंड दिस रेटिनोब्लास्टोमा जीन का फॉस्फोराइलेशन कर देगा और इनको इनएक्टिवेट बना देगा, ठीक है. सो दिस इज सिंपल थिंग, सिंपल रोल ऑफ E1 E2 E3 HPV, ओके. आपके अगर आप MBBS कर रहे हो तो आपके वाइवा में 100% क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में यू विल बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट EBV के बारे में, ठीक है. सो नाउ फंक्शन ऑफ दिस जीन बाय नाउ यू नो वेरी वेल. E1 नाउ ये DNA रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा और मोर प्रिसाइज देखोगे तो अनवाइंडिंग ऑफ द वायरल जीनोम करता है, ठीक है. E2 बेसिकली ये रिकॉग्नाइजेशन एंड बाइंडिंग ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रिकॉग्नाइज करेगा, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज ऑल्सो डाउन रेगुलेट द फंक्शन ऑफ E6 एंड E7, वो इम्पॉर्टेंट, ठीक है. सो एंड दिस पोर्शन ऑफ जीनोम ब्रेक्स ऑफ आफ्टर जीनोमिक इंटीग्रेशन, जीनोमिक इंटीग्रेशन के बाद ये ब्रेक हो जाता है. नाउ E4 बेसिकली E4 क्या कर रहा है, ये ऑब्वियसली आपका डिस्ट्रक्शन कराएगा, वायरस रिलीज कराएगा, ओके. सो दिस वायरल रिलीज ऑफ द वायरल. नाउ दिस पार्ट इज MCQ. ये क्या करेगा, ये बाइंड करता है किससे, इंटरमीडिएट फिलामेंट से, ठीक है. इंटरमीडिएट फिलामेंट से बाइंड करके क्या करेगा, साइट
साइटोस्केलेटन को डिस्ट्रॉय कर देगा और साइटोस्केलेटन को डिस्ट्रॉय करके वायरस रिलीज करेगा. सो सिंपल थिंग है ना, वायरस रिलीज करना है किसी बंदे को तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये साइटोस्केलेटन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ना. साइटोस्केलेटन को डिस्ट्रॉय करने के लिए व्हाट इट नीड टू डू, ऑब्वियसली इट नीड टू डिस्ट्रॉय द साइटोस्केलेटन एंड हैंस इट नीड टू डिस्ट्रॉय द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स विच आर प्रेजेंट हियर, एंड इसको डिस्ट्रॉय करने के बाद ऑब्वियसली योर साइटोस्केलेटन विल बी डिस्ट्रॉयड, and this is basically release portion will be very late because the virus divides and it brings about changes. बहुत ज़्यादा changes लाने के बाद this process होगा. Okay, so this is a very very late process. Okay, this is like E4 is like धोनी जो जाके बॉलर को लास्ट में जाके अटैक करता है, पहले नहीं करेगा. या you will just wait for the last over. Maybe sometime it's good, sometime it's bad. So E6 protein, E6 of HBB16 is able to induce degrade. So what this E6 do, we know that E6 and E7 they are the oncoproteins. Okay, so ये P53 को degrade कर देगा. Okay, P53 is a tumor suppressor gene, we know by now very well, and obviously P53 को कैसे degrade करेगा, it will degrade by ubiquitin pathway. Okay, ubiquitin pathway, ubiquitin protease pathway से degrade कर देगा. That is mostly important. इस फिगर से और समझ सकते हैं कि E6 क्या करेगा, E6 bind with E6AP which form E6AP complex, and this E6AP complex will result into degradation of P3 by ubiquitin pathway which will result in degradation of P53. ठीक है, so यह अगर ये complex नहीं बन रहा है तो obviously P53 will be activate and hence it will result into P53 will be activated, और इसीलिए दैट सेल्स का वो आगे का काम नहीं होगा, DNA रिपेयर और उसमें चला जाएगा. G1 साइकिल GS फेज में तुरंत नहीं जाएगा, देयर विल बी रिपेयर एंड ऑल विल टेक प्लेस. E7 का भी हमने बात कर चुके हैं कि E7 बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर बेसिकली आपका नॉर्मल साइकिल हमने सेल साइकिल पढ़ रखा है कि साइक्लिन डी और CDKs. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लिन. ओके, दो साइक्लिन डी एंड CDKs दे कॉज फॉस्फोराइलेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा. प्रोटीन विच कॉज रिलीज ऑफ एक्टिवेशन फैक्टर E2. ओके, रेटिनोब्लास्ट RB जीन का फॉस्फोराइलेशन का मतलब हो गया ये आप इनएक्टिवेट कर रहे हो. ठीक है, और RB जीन का हाइपोफॉस्फोराइलेशन का मतलब हो गया अगर आप फॉस्फोराइलेशन हटा रहे हो. सो दिस इज बेसिकली RB जीन इज एक्टिव. सो व्हेनेवर देयर इज RB जीन इज इनएक्टिव तो ऑब्वियसली आपका सेल साइकिल फिर कंटिन्यू होगा. ठीक है, सेल साइकिल विल द S सिंथेसिस फेज विल कंटिन्यू. ओके, व्हेन RB जीन इज एक्टिव एंड व्हेनेवर RB जीन इज इनएक्टिव सो फॉस्फोराइलेटेड RB जीन एक्टिव होगा तो वो कंटिन्यू नहीं होगा. एंड व्हेन RB जीन इज इनएक्टिव ऑब्वियसली द सेल साइकिल विल गो टू फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो देन ऑब्वियसली उसको क्या करना, E2F को रिलीज कर दे. नॉर्मली RB जीन क्या होता है, E2F को बाइंड करके रखता है. सो अगर RB जीन एक्टिव है तो E2F को बाइंड करके रखेगा तो सेल साइकिल कंटिन्यू नहीं होगा. ठीक है, बट अगर RB जीन इज इनएक्टिव देन E2F विल बी released. E2F will release and hence this E2F when it is will released, so this is an activation phase and this E2F will result into your what you call it cell cycle progression. Okay, so इसी के कारण progression, proliferation and growth होता रहेगा. Very important point. So I have to explain about this in cell cycle also. Go see your cell cycle. Chapter 1 में भी रॉबिन्स का भी देखो, खोल के देखो, है ना, वहाँ पे फिगर दिया हुआ है. मैंने अपने क्लास में बहुत बार दिखाया वो फिगर. सो बेसिकली E2F cause an activation of cyclin E and CDK2 which help the cell transition from G1 to S phase. Normally cyclin D CDK4 activation is kept in check by the protein. Now we know very well कि ये cyclin D और CDK4 जो cyclin and cyclin dependent kinase and cyclins होते हैं A, B, E और whatever D. Okay, so they are mostly controlled by the two families. Okay, one basically INA4. Okay, one INA4 basically INA-INC4. Okay, that is P16, P18, P9, 15. ओके, सो ये इंक क्लासेस से और किप फैमिली से. ओके, ये दो फैमिली इनको कंट्रोल करके रखती है. दैट इज ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट इन सेल साइकिल, और इससे पहले के क्लासेस में हमने बहुत बार पढ़ा. ठीक है, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है. तो दिस अ सिंपल पिक्चर विच इज शोइंग यू व्हाट यू कॉल इट दिस फिगर. ये सेल साइकिल दिखा रहा है. साइक्लिन देखो, साइक्लिन A B C D, साइक्लिन A B एंड साइक्लिन D के
cyclin dependent kinases 1, obviously there is cyclin D and cyclin dependent kinase 4 and 6. Okay, so now cyclin dependent kinase 4 and 6 बेसिकली CDK इनिवेटर्स इसको इनिवेट करते हैं, और यू हैव cyclin A and cyclin dependent kinase K2. Okay, cyclin A and cyclin dependent kinase A2, and here you have cyclin E and cyclin dependent kinase 2. Okay, so this cyclin E is helping your transformation from G to S. G to S में जाने में हेल्प कर रहा है. So इसको कौन एक्टिवेट करेगा? बेसिकली योर RB जीन अगर इनएक्टिवेट हो जाता है तो वो एक्टिवेट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ दो प्रोसेस. E7 क्या कर रहा है? आपका RB जीन, E7 प्रोटीन क्या कर रहा है? आपके RB जीन को इनिबिट कर रहा है. ओके, और RB जीन को व्हाट वी कॉल इट हाइपर फॉस्फोराइलेटेड कर रहा है. ओके, E7 protein. And what does E7 protein do? E7 protein also will help to release this E2F. So when then this E2F is released because of E7 protein, this E2F will activate cyclin E and CDKs. Okay, this will activate cyclin E and CDKs, and hence this cycle will go this way and ये proliferation की तरफ चला जाएगा. ठीक है, so this is simple funda of E7. ठीक है, नाउ व्हाट इज, अब रह गया एक E5 का. ठीक है, सो E5 क्या करता है? ये इम्यून इन्वेजन में हेल्प करता है. ये हो गया दूसरा MCQ. ठीक है, बन गया. सो बाय डाउन रेगुलेट ये क्या करेगा? MHC1 मॉलिक्यूल को डाउन रेगुलेट कर देता है. ओके, सो सिंस MHC1 इज डाउन रेगुलेटेड, इम्यून इन्वेजन. ओके, सो नाउ दिस सेल प्रोलिफरेशन हो जाएगा बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ दिस पाथवेज. ओके, RAS पाथवे, RAS एंड RAF पाथवे, MAP kinase pathway, MAC kinase, ERK pathway. Okay, so and AKT pathway. So ये pathways we have talked about all these pathways in our previous classes. So what they will do? They will inhibit apoptosis by ubiquitination and destruction of apoptotic factor BAX. Okay, and so BAX को destroy ही कर देते हैं, and causes angiogenesis by vascular endothelial growth factors and inhibit P21. Now we talked about just now कि इसमें दो KIP family होते हैं. P21 is from the KIP family, so it will inhibit the P21. So P21 को inhibit कर दिया तो यह cyclin D and CDK4 will be एक्टिवेटेड. ये इसको इनिबिट नहीं कर पाएगा, एंड हैंस द प्रोलिफरेशन होता ही रहेगा. ठीक है, सो दिस इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. सो यह व्हाट आई टॉक अबाउट, देयर इज 2 फैमिलीज ये इनिबिट करने का. एक इंक फैमिली होता है, एक किप फैमिली होता है. ठीक है, किप फैमिली इज P21, 27 एंड 57. रिमेंबर दे विल इनिबिट ऑल काइंड ऑफ साइक्लिन्स CDKs 1, 2 and 3, बट फॉर CDK4 and 6 इट इज स्पेसिफिक इंक फैमिली P15, 16, 18, 19. ओके, सो दिस इज अगेन योर MCQ. एंड हमें पता है C5 क्या कर रहा है? इसको इनिबिट कर रहा है. कि E5 इसको इनिबिट कर रहा है. ठीक है, E5 इज इनिबिटिंग दिस थिंग. सो दिस आर द रेगुलेटर्स ऑफ द सेल साइकिल. ओके, सो दो चीज़ हो गया यहाँ पे. मैंने आपको HPB के भी बता दिया और सेल साइकिल के रेगुलेटर्स भी बता दिया है ना. सो दो क्लास एक साथ हो गई. नाउ वेयर इज द बेसिक, कहाँ पे बेसिक इफेक्ट होता है? सो दिस सी स्क्वामो कॉलमनर जंक्शन. अगर सर्विक्स में बात करें तो स्क्वामो कॉलमनर जंक्शन इज द बेसिक प्लेस वेयर यू विल गेट इफेक्ट, वेयर दिस HPV विल इफेक्ट. ओके, और कहाँ पे इफेक्ट करेगा? बेसल सेल्स. ओके, दिस आर द बेसल सेल्स. सो ये बेसल सेल्स में इफेक्ट करता है ज़्यादा. सो रिमेंबर बेसल सेल्स में इफेक्ट करता है. ठीक है, सो दिस आर द बेसल सेल्स. सो दिस बेसल सेल्स, सो दिस गो आउट देयर and they will slowly try, and obviously the HPV will invade from basal cell to the upper layer. Okay, stratum corneum तक यहाँ से रिलीज हो जाता है. ऐसे सेल्स यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और ऐसे ही ये इन्फेक्शन चलता जाएगा. ठीक है, सो दिस इज इन द केस ऑफ इक्टोसर्विक्स, एंडोसर्विक्स of columnar cell. ठीक है, so these are the 2 method you will be getting your in squamous columnar junction. और कहाँ पे होता है? so cervix हो गया ये तो. ठीक है, so obviously this is again MCQ. basal cell are more exposed at the squamous columnar junction, and all these regions are vulnerable to the infection. Transformation zone, anorectal region, oropharynx, tonsils, base of the tongue. So this all area basal cells are burstly affected. Okay, so this is again simple figure. Basically I talked about this phase. So basement membrane zone में now you need to know this obviously the anchoring fibrils type 7 कोलाजन से बना हुआ है. सो ये और साइड का भी छोटे मोटे चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं उनको भी ले रखा है. ओके, दैट इज लैमिना लूसिडा एंड लैमिना डेंसा. सो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के पार्ट्स. ओके, एंड डर्मल कोलाजन विच इज टाइप 1 कोलाजन से फॉर्म होता है. सो नाउ व्हाट हैपन, ऑब्वियसली दे विल बी इफेक्टिंग दिस
बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन को इफेक्ट करेंगे, एंड दिस सेल विल बी बेसल सेल, विल बी द बेसल सेल आर फर्स्ट टू बी इन्फेक्टेड इन केस ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV. ओके, तो सी एंड वन मोर थिंग, वो क्या करेंगे, सो HPV दे यूज इंटेग्रीन्स यूज करते हैं अल्फा 6 एंड बीटा 4. ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट इंटेग्रीन्स, लॉट ऑफ इंटेग्रीन्स. सो अल्फा 6 एंड बीटा 4, this integrin is helping into penetrate this basal cell. Okay, penetrate this basement membrane. Okay, very very important. You can this can be another question. Now as I said, there are two मेथड्स. वायरस दो है, एक इंटीग्रेटेड होता है, एक एपिजोमल होता है. ठीक है, नाउ दिस वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्वियसली आपके रॉबिन्स में भी ये क्वेश्चन है और इसके बारे में एक्सप्लेन है. यूनिट टू रॉबिन्स में एक लाइन दे रखा है, सो यू नीड टू नो अबाउट दिस थिंग. ओके, सो इंटरेस्टिंगली क्या होता है यहाँ पे, जो इंटीग्रेटेड मीन्स योर होस्ट डीएनए के डीएनए में इन्वॉल्व हो गया. ठीक है, इंटीग्रेटेड. सो एपिजोमल मीन्स योर ऑब्वियसली आपके host DNA में नहीं, it is found in the cytoplasm. So basically viral DNA lies outside in the cytoplasm. Integrated form viral DNA integrates within the host DNA, leading to deletion. So there will be deletion of E2 genes, and hence there E2 basically, as I said, it down regulates E6 and E7. तो अब E6 और E7 down regulation नहीं हो पाएगा. Okay, so that is basic thing you need to remember here. Now integrated form responsible. Now this is your MCQ. यहाँ पे MCQ है. इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या होता है, बेसिकली आपका हाई ग्रेड का ट्यूमर्स करा रहा है. ठीक है, जैसे कि एच सील एंड कार्सिनोमाज आ रहा है, बिकॉज योर बेसल सेल डोंट गेट एनी चांस टू मैच्योर. okay, and episomal forms they lead to low grade, okay, L seals and like changes as curse and all. So ये maturation of basal cell is possible in this. So this is your MCQ. ये भी बन गया आपका MCQ. ठीक है, integrated form और episomal form. So integrated form आपका normally carcinoma या H seals में बना रहा है, और L seals basically episomal forms बना रहे हैं. ठीक है, सो नाउ HPV लाइफ साइकिल, सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बेसिकली वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस कि ये नॉर्मली बेसल सेल को इन्फेक्ट करते हैं. मिनिमल वायरल रेप्लिकेशंस होता है बेसल सेल में. रिमेंबर बेसल सेल को इन्वॉल्व करेंगे. नाउ पॉइंट ये याद रखना कि ये इन्फेक्ट तो बेसल सेल को करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, इनका जो वायरल रेप्लिकेशन हो रहा है ना, वो बेसल सेल्स में नहीं हो रहा है. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज ओनली मिनिमल वायरल रेप्लिकेशन इन बेसल सेल. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, वायरल सेल जैसे बेसल सेल में आ गया, सो वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेशन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रेटम स्पाइनोसम. ओके, सो नाउ दिस इज स्ट्रेटम स्पाइनोसम में जीनोम का इनकॉर्पोरेशन होता है, और प्रॉपर वायरल रेप्लिकेशन विल टेक प्लेस इन स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम. ओके, स्ट्रेटम स्किन के डिफरेंट लेयर्स में, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम. ओके, देन यू हैव कैप्सिड प्रोटीन प्रोडक्शन एंड वायरल असेंबली टेक्स प्लेस इन स्ट्रेटम कॉर्नियम वेयर दे आर रिलीज्ड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डिफरेंट लेयर्स, कहाँ कहाँ पे HPV जाके इफेक्ट करता है. सो नो अदर स्ट्रेटा आर द वायरल स्ट्रेटेड आउट. सो वायरल सिर्फ स्ट्रेटम कॉर्नियम में स्ट्रेटेड आउट होता है. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर, सो दिस इज द प्रोसीजर. सो ये देखो, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये इन्फेक्टेड एपिथेलियम है. सो यह दिस इज इन्फेक्टेड ऑफ द बेसल सेल को इन्फेक्ट कर रहा है. ओके, देन स्पाइनोसम में जाके एपिसोमल वायरल DNA इन सेल न्यूक्लियस. सो ऑब्वियसली रेप्लिकेशन बेसिकली आपके ग्रेनुलोसा में हो रहा है, और असेंबली बेसिकली कॉर्निया में हो रहा है. ठीक है, एंड दिस आर द रेप्लिकेशन एंड बेसिकली शेडिंग ऑफ द वायरस कॉर्नियल रीजन में हो रहा है. सो दिस इज बेसिक classical way how HPV infects. Now your basic simple thing कि obviously HPV they have a low risk, intermediate risk or high risk, or basically we call it high risk and low risk. Okay, so high risks are 16, 18 and 45 are R risks. Intermediate are all basically in the line of 30, 31, 33, 35, 39, 52, 56 and 58, and 6, 11 low risks. This is very important, you need to know this. And 42 to 44, these are again low risks. Okay, so these are basically low risks HPV, or you can just remember this in another way. We talked about high risks and low risks. Okay, so ज़्यादा सबको high risks में डाल दो and low risks में डाल दो. ठीक है, low risks में 6, 11, 42. So you remember 6, 11, 42, 43, 44 as low risks. Okay, and rest of them all are high risks. Or you can just remember 16, 18 and 45, they are high risks. Okay, and then 6, 11, 42, 43, 44 are low risks. उसके बीच के सब intermediate risks हैं बोल के याद कर सकते हैं. So now this point is to be remember. HPV types 16, 18, 31 and 45 are detected in 80% of the cervical cancers. Okay, important thing.
So now this table basically will राउंड अप HPV के कौन सा टाइप का क्या करा रहा है. ओके ये अब जैसे कॉमन वॉट बेसिकली दे विल बी कॉज बाय 2 and 7, प्लांटर वॉट बेसिकली 1 2 3 4 and 63, फ्लैट वॉट 3 10 and 8, anogenital ward 6 11 42 44 and 18. Okay, so these all are low risk type. Anal region 6 16 18 31 53 and 58 ये high risk type का हो गया. Genital cancer high risk, other risk probable high risk. Epidermodysplasia verrucosiformis more than 15 types. So यहाँ से begin होता है. We have talked about this. Focal epithelial hyperplasia, oral papillomas. Okay, 6 7 11 16 and 32. Okay, so this all यहाँ से पूछ सकता है. ठीक है, ये you need to remember about this table. You need to remember, there is no other option. Oropharyngeal cancer, laryngeal papillomatosis. Now this is an MCQ. ठीक है, ये MCQ है. laryngeal papillomatosis. Oropharyngeal cancer ये एक MCQ है. So ये सिंगल वाले ज़्यादातर आपके पास MCQ आ सकता है. ठीक है, ये focal epithelial hyperplasia, this is an MCQ. focal epithelial hyperplasia. Anogenital wart, again this is an MCQ. ठीक है, and anogenital lesion. So ये दोनों चीज़ याद रखना. ठीक है, lesion and anogenital wart इनका cause. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अबाउट HPV वायरस टाइप, डिफरेंट कॉज कैसे कैसे हो रहा है. ठीक है, नाउ हाउ यू विल डिटेक्ट दिस वायरस. सो ये मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, बस बेसिकली यू विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कॉल्पोस्कोपी कर सकते हैं, सेल मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं, HPV प्रोटीन्स देख सकते हैं, HPV जीनोम्स, anti-HPV antibodies, you can do cell cultures, you can do electron microscopy. Okay, so these are some of the basic things, basic way you can detect. Okay, detect or how you can diagnosis of HPV कैसे कैसे करते हैं. Okay, you might have learned about this all things in your ये गाइने में, जैसे विजुअल इंस्पेक्शन, कॉल्पोस्कोपी, सेल मॉर्फोलॉजी देख सकते हो, HPV प्रोटीन्स, HPV जीनोम्स, anti-HPV एंटीबॉडीज, सेल कल्चर एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आपने पढ़ा होगा. बट नाउ व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर इज दिस इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इस्टेब्लिश ऑन्कोजेनिसिटी बाय वायरल जीनोम देख के, है ना. और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट मस्ट सेंसिटिव टेस्ट इज जीन एम्प्लीफिकेशन. ओके, देन you need to know must specific is hybridization. Okay, and must electron microscopy is the gold standard one. ठीक है, so now this is the point where you can get MCQ. Okay, so basically I have not gone in the detail of the procedures. For the detail of the procedure we'll talk जब हम basic उसी चीज़ के लिए पढ़ेंगे, then we'll talk about the detail of procedure. For now it's important processes कौन सा है, और most sensitive, most specific and gold standard कौन सा है. ठीक है, so this is all about HPV. Shortcut में you can learn about more about HPV in coming. We will talk about HPV when we just सब oral पढ़ेंगे, जब हम बेसिकली जब हम सर्वाइकल कैंसर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल टॉक अगेन अबाउट देम बेसिकली. बट दिस इज द बेसिक फंडा यू नीड टू नो अबाउट HPV. इफ यू आर नोइंग दिस बेसिक फंडा, नाउ इजीली you can do and see what about changes will occur in different cancers in that. So now polyoma virus, so this is the small virus with genome of 5 kilobase, not so important point. So there are two types of human polyoma virus which was isolated, so BK and JC. Now this is important. Okay, so BK and JC, basically BC, and this is neither of them is coming from the tumors. Okay, so BK it come from the urine of the kidney transplant patient, and JC basically coming from the brain of Hodgkin's lymphoma patient who progressed to PML. Okay, progressive multifocal leukoencephalopathy. However, they cause tumors which injected into the animals. Okay, now very important, पोलियोमा वायरस के बारे में ये आपको जानना है, कहाँ से आया. ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट से. सो बीके दिस ये MCQ तो बहुत हिट और बहुत बार पूछा गया है. ठीक है, BK और JC के बारे में पोलियोमा वायरस से. Now basically some important points which you need to know is 70 to 80% of human population is seropositive for JC. Okay, so now ये PML cause करेगा, which is obviously associated with immunosuppression. And basically nowadays, since AIDS has become more common, you are seeing more of this JC virus. Okay, and BK virus, it is cause of nephropathy and graft failure का है in immunosuppressed renal transplant recipient, and has anti-BK antibodies by the age of 10. This is given in Western countries. Recently, this BK virus, it is also has been associated with human prostate cancer. Now this point becomes important. Okay, now 3 other polyoma virus have been recently. So BK और JC के अलावा polyoma virus
So key, wu, and Merkel cell polyoma virus. So these are the three other polyoma virus which have been discovered. And this Merkel cell polyoma virus, it is responsible for Merkel cell carcinoma. So स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है. Now, see, remember, polyomavirus are usually lytic, and when transformation occurs, it becomes the transforming virus is defective. So remember, आपको फिर से अब अपने माइक्रोबायोलॉजी में जाओ और यहाँ पे अब लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में कुछ पता होना चाहिए, ठीक है. वायरसेस लाइटिक साइकिल होता है और लाइसोजेनिक साइकिल होता है. बेसिकली लाइटिक साइकिल में क्या हो गया, ये आपका वायरस, ये सपोज बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया का डीएनए हो गया ये. नाउ ये क्या आएगा, ये बैक्टीरियोफेज आएगा यहाँ से. सपोज ये बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए डाल देगा, अपना जीनोम डाल देगा. ओके, नाउ व्हाट हैपन, दिस विल ब्रेक डाउन दिस होस्ट डीएनए को ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है. होस्ट डीएनए को ब्रेक डाउन कर देगा. ये होस्ट डीएनए ब्रेक डाउन हो गया. ओके, सो दिस इज वायरस डीएनए, वायरस का जीनोम. नाउ व्हाट हैपन, दिस वायरस जीनोम, इट विल यूज द न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ दिस होस्ट जीनोम का न्यूक्लियोसाइड्स यूज करने लग जाएगा और ये अब डिवाइड होने लग जाएंगे. सो दिस विल स्टार्ट डिवाइडिंग. ये अपना डिवीजन अंदर डिवीजन कर लेगा एंड हैंस दिस विल स्टार्ट फॉर्मिंग अ बैक्टीरियोफेज. अंदर ही बैक्टीरियोफेज कर लेगा और लाइटिक होगा तो लास्ट में लाइसिस करके, सेल लाइसिस करके बाहर निकल जाएंगे. सो दिस इज ऑल द लाइटिक साइकिल. इन लाइसोजेनिक साइकिल इट इज़ बेसिकली इंटीग्रेशन होता है, ठीक है. ये वायरल जीनोम, ये जो बैक्टीरियल वायरस का जीनोम है बैक्टीरियोफेज का, ये जाके यहाँ पे कंबाइन हो जाता है, ठीक है. यहाँ पे इसके साथ मिक्स हो जाता है एंड ये अब डिवाइड करने लग जाएंगे. सो दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग. सो ये डिवीजन होने लग जाएगा, ठीक है. सो नाउ रिमेंबर, लाइसोजेनिक फेज लाइटिक फेज में भी जा सकता है, बट लाइटिक फेज कैनॉट गो इनटू लाइसोसोम. सो लाइसोजेनिक फेज, ये आप अपना माइक्रोबायोलॉजी में जाके अब एक बार रिवीजन कर लो. ओके, इंटीग्रेट करो माइक्रोबायोलॉजी में. आपका लाइटिक एंड लाइसोजेनिक के बारे में यहीं पे खत्म हो जाता है. ओके, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक के बारे में नॉर्मली कभी कभी माइक्रोबायोलॉजी में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है. सो यू नीड टू रिमेंबर lytic phase and lysogenic phase of life cycle of virus. So important, so easy, nothing more than. So basically polyoma virus क्या है, lytic phase. So after integration into the host DNA, only early functions are transcribed into mRNA and expressed as protein product. There are tumor antigens because these are the tumor antigens because the expression of the gene for tumor antigen is essential for transformation of cell. They may be classified as oncogene. Nothing, not so important points here. Now coming to the another very important thing, that is EBV. Okay, Epstein-Barr virus. So now ये दूसरा है जो कि we will take time to discuss about this और इसको भी यहीं कंप्लीट करेंगे. ये अब और जगह शायद आपको नहीं पढ़ाया जाएगा EBV के बारे में, ठीक है. सो इम्पोर्टेंट. सो बेसिकली EBV इज द एप्स्टीन-बार वायरस. ये क्या है, मेंबर ऑफ गामा हर्पिस फैमिली. इट इज़ बेसिकली HBV4 हर्पिस फैमिली का है. सो इट इज़ अ डबल स्टैंडर्ड लीनियर DNA जीनोम. यहाँ एक पॉइंट बन चुका है, ठीक है. ये MCQ हो गया, डबल स्टैंडर्ड लीनियर DNA MCQ. सो ये अनअकैडमी MCQ ऑफ द डे, ये भी हो गया. ओके, so explained by protein capsid 120 to 100 nanometer. Okay, so ये MCQ of the day बन गया, Unacademy and MCQ of the day. Unacademy छक्का लगा देते यहाँ पे. Viral envelope is embedded with glycoproteins essential for viral entry into the cell. Okay, now this viral envelope, this is embedded with the glycoprotein with essential viral entry into the cell. So nothing important. यहाँ पे यही याद करना कि इसमें जो मेम्ब्रेन्स होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स यहाँ पे एम्बेडेड होते हैं, है ना, प्रोटीन्स होता है, और RNA वायरस इन EBV वायरस. जो बेसिकली ये डबल सिंगल DNA वायरस है. ओके, लीनियर DNA जीनोम है इसमें, जहाँ पे RNA पैक्ट होता है अंदर और कैप्सिड होता है इसको कवरिंग करने वाला. सो नथिंग मोर यार. ये स्ट्रक्चर यू कैन जस्ट अपना माइक्रोबायोलॉजी से फिर से स्ट्रक्चर्स के बारे में देख सकते हो. बट मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर यार कि इट कैन बी बेसिकली टाइप 1 एंड टाइप 2 हो सकता है. नाउ सी ट्रांसमिशन, यह इज आपका MCQ हो गया कि अनअकैडमी MCQ ये बन गया. ओरोफेरेंजियल सिक्रीशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ट्रांसप्लांटेशन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ ट्रांसमिशन. सो दिस आर द 3 मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस. सो नाउ दे इफेक्ट कहाँ कहाँ करते हैं, किस चीज़ को, ये B सेल्स को इफेक्ट करते हैं, एपिथेलियल सेल्स को इफेक्ट करते हैं, T सेल्स को इफेक्ट करेंगे, डायरेक्टली नहीं करेंगे. T सेल्स को इफेक्ट करके B सेल्स को ही प्रोलिफरेट कराते हैं, नेचुरल किलर T सेल्स को एंड स्मूथ मसल सेल्स को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस आर द इफेक्ट्स वेयर यू कैन सी इन केस ऑफ EBV. ओके,
सो एंट्री ऑफ द सेल, सो सी एंट्री ऑफ द सेल एपिथेलियल सेल्स में एंट्री करते हैं और बी सेल्स में करते हैं, ठीक है। सो एपिथेलियल सेल्स में बेसिकली यू सी दिस इज लाइटिक साइकिल से एंट्री करेंगे, ओके। सो ओरोफेरेंजियल एपिथेलियम मैक्सिममली इज द एंट्री पॉइंट फॉर एपिस्टेन बार वायरस। ABB complex to IJ receptor on the epithelium and enter lytic phase, okay, lytic phase में enter हो जाता है। The virus spread out from the infected cells and directly infect nearby B lymphocytes and B cells में that is latent infection. Now here comes the major important point about this, okay, so latent, so EBB में when आप EBB के बारे में जब बात कर रहे हो, epstein barr वायरस के बारे में जब बात कर रहे हो, so you need to know latent phase. So epstein barr वायरस latent phase में रहता है, इसका latent phase होता है। Now that is what the question been asked most of the time, latent phase, क्या क्या latent phase है, ठीक है, वही क्वेश्चन है। नाउ इसमें क्या होता है बेसिकली, जो भी इसका जो वायरस के ऊपर जो सेलुलर रिसेप्टर होता है, सो दैट रिसेप्टर इज बेसिकली वर्किंग लाइक दैट ऑफ यू हैव CD21 रिसेप्टर जैसा काम करता है, ठीक है। ये वायरस रिसेप्टर है, EBB रिसेप्टर, दिस इज EBB रिसेप्टर, ओके। एंड दिस व्हेनेवर EBB वायरस कम्स हियर इट कंबाइंस विद दिस EBB रिसेप्टर, ओके। सो बेसिकली ये बी सेल में कर रहा है, यानी कि ये बर्किट लिम्फोमा का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये बर्किट लिम्फोमा का मैकेनिज्म हो गया कि CD जो आपके लैटेंट इन्फेक्शन में रहेगा, वायरस आएगा, वायरस CD21 रिसेप्टर से कंबाइन होता है, ठीक है, CD1, एंड देन इन इन्फेक्टेड बी सेल्स द लीनियर जीनोम सर्कुलाइजेस एंड अब ये लैटेंट फेज में एज इपिजोम इन द न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है, न्यूक्लियस में एज इपिजोम रहेगा, ठीक है, न्यूक्लियस में एज इपिजोम। नाउ रिमेंबर एज इपिजोम रहेगा, यानी कि बाहर साइटोप्लाज्म में पड़ा रहेगा, DNA के साथ ये नहीं रहेगा, ठीक है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर। सो नाउ बेसिकली जब इनका एक्टिवेशन हो जाता है, ये पॉलीक्लोनल बनाते हैं पहले, ठीक है, पॉलीक्लोनल, विल टॉक अबाउट दिस, सॉरी। सो लेटेंसी में क्या होता है, देयर यू नीड टू रिमेंबर कि लेटेंसी में देयर आर 3 पैटर्न्स ऑफ लेटेंसी, ओके। लेटेंसी प्रोग्राम इसका जो EBB का, आपको EBB व्हेन यू वांट टू नो अबाउट EBB, सो लेटेंसी यू नीड टू नो अबाउट लेटेंसी, एपिस्टेन बार वायरस लेटेंसी इन्फेक्शन के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। HSB फैमिली में ही जब हम बात करते हैं तो लेटेंसी के बारे में बात करते हैं। सो इसका 3 लेटेंसी है, ठीक है, दिस हैज 3 लेटेंसी, लेटेंसी 1, लेटेंसी 2 एंड लेटेंसी 3, ओके। सो वी स्टार्ट अपॉन सी व्हेनेवर अ रेस्टिंग नाइफ बी सेल इट इज व्हेन इन्फेक्टेड देन EBB विल एंटर इनटू द लेटेंसी फेज 3, ओके, EBB लेटेंसी फेज 3 में। सो इन लेटेंसी फेज 3 में क्या होता है, देयर आर विल टॉक अबाउट दिस कि in latency phase 3 the B cells they are converted into proliferative blast cells, so B cell activation occurs in latency phase 3, okay। latency phase 3 में जो हमें now you need to remember EBB क्या करता है, अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन्स बनाता है, न्यूक्लियर प्रोटीन्स बनाता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बनाता है, ओके। सो दोज ऑल ऑफ द टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर एक्टिव इन दैट लेटेंट फेज 3, लेटेंट फेज 3 में सब एक्टिव होते हैं एंड हैंस देयर विल बी बी सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है। नाउ थर्स वायरस रेस्ट्रिक्ट्स इस जीन एक्सप्रेशन एंड इंटर्स इन लेटेंसी 2, अब वायरस क्या करेगा, आपका जीन एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देगा और ये लेटेंसी फेज 2 में इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, लेटेंसी फेज 2 विच इंड्यूसेस बी सेल टू डिफ्रेंशिएट इनटू द मेमोरी सेल, मेमोरी बी सेल। सो लेटेंसी फेज 2 में मेमोरी बी सेल्स में जाता है। फाइनली EBB रेस्ट्रिक्ट्स इट्स जीन एक्सप्रेशन ज़्यादातर कंप्लीटली कर देता है एंड दैट इज लेटेंसी फेज 1। सो लेटेंसी फेज 1, फेज 2, फेज 3, सो फेज लेटेंसी फेज 3 में आपका ज़्यादातर इसका जो प्रोलिफरेशन हो रहा है और इसका जो जीन एक्सप्रेशन है EBB का दैट इज वॉकिंग, ओके। लेटेंसी 2 में इट रेस्ट्रिक्ट सम ऑफ द जीन एक्सप्रेशन एंड इन लेटेंसी 1 इट हैज कंप्लीटली अपना सब जीन एक्सप्रेशन रेस्ट्रिक्शन कर देता है, ठीक है। So what is here? So these are the latent gene products, remember. So it nuclear proteins EBNA1, EBNA2 and EBNA6, they are the gene products, latent gene products. Now what you need to know about this all products is here that this EBNA1, EBNA2, so they all are helping in oncogenesis, ठीक है, ये oncogenesis में help कर रहे हैं। Now membrane protein basically LMP1, LMP2 and LMP3, so they are the membrane proteins. So this again you need to know about the LMP1, LMP2, so very important. So यहाँ पे EBNA1 क्या कर रहा है, it binds to the host DNA bind करेगा and it maintain in the episome form, and EBNA2 it will upregulate the expression of LMP1 and 2 and other cellular proteins that contribute to the growth and transformation of B cell. EBNA6 is the potential oncogene. So these are basically, now what we are concerned is we need to know EBNA2 के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है, very much important, ठीक, and we need to know about LMP1. So these are two, as I said in the first
एक टेबल में भी देखा था कि इसका मेन ऑन्कोप्रोटीन कौन सा है, LMP1. सो LMP1 सी इट एक्ट्स एज एन ऑन्कोजीन and it is implicating in B cell lymphomas. LMP2, where what it does, it prevents reactivation of BB from latently infected infection by blocking tyrosine kinase phosphorylation. So ये reactivate होने नहीं देता है. So LMP2 को तो ये वो करना पड़ेगा, इसको एक्ट अगेंस्ट में एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है. सो योर LMP1 इज मेजर ऑन्कोजीन हियर, ठीक है. नाउ EBV इनकोडेड RNA इज ऑल्सो, ये प्रोटीन्स हो गया, ये न्यूक्लियर प्रोटीन्स हो गया, RNA भी है. सो दैट इज EBER1 एंड EBER2, ओके. सो दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन ऑन्कोजेनेसिस, रेजिस्ट सेल डेथ, एंड अनदर वायरल RNA BRAFO is also detected, okay. So now see here, you can see here, this is basically what I say, that is latency 3 में basically your latency 3, your most of the nuclear proteins, or most of the nuclear proteins, the proteins and the RNAs, they are active, okay. जैसे EBNA1, EBNA3, EBNA2, LMP1, LMP2, all are active, okay, in this case. So basically in latency 3 usually involves the unrestricted expression of all EBNAs, and hence latency 3 you will see most of the lymphoproliferative disease in immunocompromised cases, okay. In latency 2 you will see Hodgkin's lymphoma and nasopharyngeal carcinoma, okay. Latency 2 there will be most of them are inhibited. In latency 2 usually limited to EBNA1 and EBERs, LMP1, LMP2, LMP1 and LMP2, okay. So most of it is restricted. EBNA2 और ये सब तो है restrict हो गया, ठीक है. So it is limited to, it will only show LMP1 and LMP2 and obviously EBNA1, okay. Now and in case of Burkitt's lymphoma or in case of type 1 latency, what you will see, it is restricted to only EBNA1. ऑल अबर आर रेस्ट्रिक्टेड, सब ज़्यादातर रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है. अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेशन सिर्फ EBNA1 का होगा और ज़्यादातर सब का रेस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेशन हो जाता है, ठीक है. दैट इज लेटेंसी फेज 1. सो ट्यूमरजेनेसिस होने के लिए क्या होगा, इट्स यू नीड टू बी सेल्फ सफिशिएंट, एंड ऑब्वियसली LMP1 इज हेल्पिंग दैट. LMP1 ऑब्वियसली विल एक्टिवेट द NF कप्पा बी एंड जैक स्टैट पाथवे, ठीक है. LMP1 ये ऑन्कोजेनिक है, ओके. ये क्या करेगा, NF कप्पा बी पाथवे को एक्टिवेट कर देगा, एंड ऑब्वियसली दिस पाथवे वी नो इट इज हेल्पिंग फॉर द ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है ये जैक स्टैट पाथवे एंड NF कप्पा बी पाथवे, ओके. सो बेसिकली दिस विल हेल्प इन प्रोलिफरेशन एंड सर्वाइवल, प्रोलिफरेशन एंड सर्वाइवल, ये दोनों चीज़ में हेल्प करेगा बी सेल का. सो बी सेल का प्रोलिफरेशन भी हो जाएगा और सर्वाइवल में भी हेल्प करेगा, ठीक है. एंड ऑब्वियसली LMP1 विल ऑल्सो दिस, ये LMP1 क्या करेगा, आपका CD40 रिसेप्टर की तरह एक्ट करेगा, CD40 के रिसेप्टर की तरह. एंड वी नो CD40 व्हेन कंबाइन विद CD40L लाइगेंड, सो बी सेल्स का एक्टिवेशन हो जाता है. सो हेंस इट इज मिमिकिंग द बी सेल एक्टिवेशन फैक्टर, ओके. बी सेल एक्टिवेशन, सो टी सेल हेल्पर के साथ मिमिकिंग कर रहा है. सो दैट विल ऑल्सो हेल्प. LMP1 वो भी हेल्प करता है, ये CD40 रिसेप्टर की तरह भी एक्ट करता है, ओके. So this is again your MCQ point, okay. And obviously what this is LMP1, it will prevent apoptosis भी प्रिवेंट करेगा. इट विल एक्टिवेट BCL2 को एक्टिवेट कर देगा, एंड हैंस इट विल प्रिवेंट एपोप्टोसिस ऑल्सो, ओके. प्रिवेंट एपोप्टोसिस. सो दिस आर द मेजर थिंग्स विच विल बी डन बाय LMP1. नाउ इवेजन ऑफ एपोप्टोसिस, ये यहाँ पे है LMP1, ऑब्वियसली ये क्या करेगा, BCL2 एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर को एक्टिवेट कर देगा, ओके. नाउ प्रोटोऑन्कोजीन एक्टिवेशन, एंड देन देयर इज अ प्रोटोऑन्कोजीन एक्टिवेशन. EBNA2 इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है. एक्टिवेट मैनी प्रोटोऑन्कोजीन्स एंड दिस एक्ट लाइक अ नॉच लाइक रिसेप्टर, ओके. सो EBNA2 बेसिकली इट एक्टिवेट्स अ न्यूक्लियर प्रोटीन. EBNA2 इज अ न्यूक्लियर प्रोटीन, है ना, ये न्यूक्लियर प्रोटीन है, ये एक्टिवेट हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा प्रोटोऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट करेगा, विच एक्ट लाइक अ नॉच रिसेप्टर, ओके. सो दिस एक्ट लाइक अ नॉच रिसेप्टर एंड इट विल ट्रांस एक्टिवेट होस्ट जीन्स. ये क्या करेगा, आपका साइक्लिन डी को एक्टिवेट करेगा, SRC फैमिली को एक्टिवेट कर देगा, एंड साइक्लिन डी एक्टिवेट हो जाएगा तो सेल साइकिल प्रोलिफरेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है. सो वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ट्यूमरोजेनेसिस इन केस ऑफ EBV, ओके. सो स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज कौन सा करा सकता है, यू कैन हैव लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, high risks of autoimmune disorder, oral leukoplegia, and hematological complications like aplastic anemia, pure red cell aplasia, and thrombocytopenia. All are MCQs, okay. EBV associated aplastic anemia हो सकता है, EBV associated pure red cell aplasia हो सकता है, thrombocytopenia हो सकता है. You can have lymphoproliferative disorders, you can have nasopharyngeal carcinoma. So all are MCQs, okay, which can be asked in exam. Simple straight single liner MCQs बन सकता है,
ओके. सो नाउ ये बेनाइंग लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीज में बेनाइंग लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीज करा सकता है, जैसे कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस लिम्फेडेनाइटिस, क्रोनिक एक्टिव एब्स्टेन बार वायरस इन्फेक्शन, केव, ओके, familial X linked lymphoproliferative disease and virus associated hemophagocytic syndrome. Very important. Okay, सारे ये बेसिकली बेनाइंग लिम्फोप्रोलिफरेटिव ऑल आर एसोसिएटेड विथ EBV से एसोसिएटेड होता है. वेरी मच इंपॉर्टेंट. Then EBV associated lymphomas are in B cells. You have Burkitt's lymphoma, very important. Lymphoma in congenitally immunodeficient patient, post transplantation lymphomas, acquired immunodeficient syndrome lymphomas, and there are some others, but these are the major type of lymphomas which you case in case of B cell. Okay, B cell mein. And T cells, you have vast T cell lymphoma, nasal and NK T cell lymphomas, and other T and natural killer cells. So these are the important ones in case of T cell lymphomas. Then others, what we call it, carcinomas are nasopharyngeal carcinoma, gastric carcinoma, smooth muscle tumors, and undifferentiated salivary gland tumors. Important. Okay, so we'll talk something little about like neoplasm B cells. So it causes Burkitt's lymphoma. Burkitt lymphoma कराता है. So ये high grade lymphoma of small non-clip B cells. Okay, small non-clip B cells. So this endemic Burkitt lymphoma, that is in Africa, Burkitt lymphoma, which associated strongly with greater than 95% associated with EBV होता है. It's a childhood malignancy. Most common site is jaw, facial bone, and malaria infection considered as cofactor for Burkitt lymphoma, which I have already dealt. Okay, which I've already explained about this. Okay, important point is already explained. Now sporadic Burkitt lymphoma, this is seen in worldwide, and it's obviously slight late peak होता है इसका, and this present as abdominal mass. So basically when a child is presenting with abdominal mass, आपका abdominal mass से present हो रहा है, okay, और respiratory mass से present हो रहा है, then you should think of Burkitt lymphoma as one differential. Okay, associated with EBV. So ये only 5 to 15% is associated with EBV. Okay, sporadic. Again an MCQ. Expression of EBNA1, EBER latency 1, and EBNA3A, EBNA3B, EBNA3C, EBNA leader protein. So ये EBNA का expression होगा and EBERIS होगा. So you can we do EBERIS करते हैं. EBERIS positive भी आता है, latency 1 in case of Burkitt lymphoma, in case of sporadic. Okay, so here we have Burkitt lymphoma का डिटेल हमने डिस्कस नहीं किया है. बेसिकली वी डिस्कस लिटिल बिट अबाउट दिस ट्यूमर. ओके, वील टॉक अबाउट Burkitt lymphoma इन कमिंग व्हेन वी टॉक अबाउट लिम्फोमाज. ओके, लिम्फोमाज में Burkitt lymphoma का कंप्लीट हम यूज करेंगे. सो यह दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोर देन इनफ इन केस ऑफ Burkitt lymphoma. ठीक है. नाउ what you need to know more is lymphoma in congenital immunodeficient patient. It is an X-linked lymphoproliferative disorder. 20% have increased susceptibility to B-cell lymphomas. Can involve any organ but frequent in ileocecal region. Usually Burkitt lymphoma ही होता है ये. Okay, and immunoblastic large non-clipped. Okay, they are large non-clipped. Okay, so in Burkitt lymphoma they are small clipped cells. Small clipped or mixed cell lymphomas can occur. Here immunoblastics can also occur. So common variable immunodeficiencies, other immunodeficiencies like common variable immunodeficiency, Wiskott, Eldridge syndrome. So this all can also occur in case of lymphomas. Okay. Now AIDS lymphoma, in you can get in AIDS patient, increased amount of EBV in oropharyngeal secretions, have 10 to 20 times as many circulating EBV infected B cells as healthy person, suppress EBV infected B cell less effectively. So this is another example. Burkitt lymphoma, large cell lymphomas, we have talked about them. Primary effusion lymphomas also can be associated, okay, with EBV. Primary effusion lymphomas. Other EBV associated lesions in AIDS are oral hairy leukemia and lymphoid interstitial pneumonia and leiomyosarcomas. Okay, HIV positive children, frequent site is lungs, GIT and liver. So important. So you just can remember all these names. Okay, ये सब नाम आपके MCQs में आ सकते हैं. ठीक है, leiomyosarcoma, ये सब EBV associated lesions हैं in AIDS also. Now another very important, Hodgkin's disease. So Hodgkin's disease, EBV genome is present in Hodgkin's and Reed-Sternberg cells. Okay, EBV DNA most often found in lymphocyte depletion. Okay, EBV DNA lymphocyte depletion 95%, mixed cellularity 70%, nodular sclerosis 40%. So okay, now this becomes your MCQ. So सबसे ज़्यादा common कौन सा है? Lymphocyte depletion. So many times this can be asked. It is men versus women. Men is more. Patient with immunodeficiency, there will be expression of LMP1, very much important point. Your LMP1
EBNA1 and EBER is indication of latency 2. So basically Hodgkin's disease is there is indication where you have EB1 सिर्फ ये है तो ये latency 1 है, और चीज़ हो रहा है तो latency 2 है. So this again indication of latency 2. Post transplantation lymphoproliferative disease so occur due to T cell suppression during transplantation. Level of immunosuppression major risk factor for post transplantation lymphoproliferative disease. So this also associated with EBV, very much important. Okay, now again coming to the classical post transplantation disease are graded histologically into early lesion, polymorphic lesion and monomorphic lesion. So not so important. You need to remember basically you need to remember this point that 100% as nearly 100% is associated with EBV. Okay, very much important. So ये just आपका information रखने के लिए रखा slide. Other B cell lymphomas, basically B cell lymphomas arising at site long-term inflammation, pyothorax associated lymphomas seen in patient 20 years after introduction of artificial pneumothorax, diffuse large B cell lymphoma as site of chronic inflammation in bone and skin. Okay, so not so important, but yeah, you can just remember ये DLBCL भी कर सकता है और pyothorax lymphoma associated lymphoma भी कर सकता है. Okay, this can be given as one MCQ point. So T cell lymphomas which we have talked about, so it can be virus VATS, so virus associated hemophagocytic syndrome T cell lymphomas, that is VAS tumor. Okay, so these are also associated with Epstein-Barr virus, and nasal natural killer T cell lymphomas. Okay, so these are also associated with as Epstein-Barr virus. Okay, so they are the extranodal lymphomas of angiocentric type developed from long lasting infection termed as chronic disease. Okay, so it is a chronic disease associated with Epstein-Barr virus. So most common in Southeast Asia, China. So now this is again MCQ. Okay, you need to remember. Present in nasal cavity and cause progressive erosion of bone. Detection rate of 84% has been recorded. Expression of natural killer cell marker CD56. So it is nasal natural killer T cell lymphomas. Okay, these are the extranodal lymphoma of angiocentric type. Remember, okay, and obviously cave से arise होते हैं. Very much important. ये point हमेशा याद रखना. And other natural killer T cells like lymphomas in skin and GIT, and even angioimmunoblastic lymphadenopathy like T cell neoplasm can also occur in case of Epstein-Barr virus. Okay, so Epstein-Barr virus का आपको एक लाइन ज़रूर याद रखना है कि obviously which of the following T cell lymphoma is caused by Epstein-Barr virus, or which is not caused by EBV, or which is not associated with EBV, you need to know. Another HSV8 virus, that is Kaposi sarcoma. We have discussed about Kaposi sarcoma. So this infects lymphocytes and epithelial endothelial cells. Causative agent of Kaposi sarcoma, most common neoplasm in AIDS patient. Okay, again also for primary effusion lymphoma, multicentric Castleman disease. Okay, it can also cause SPB, primary effusion lymphoma, multicentric Castleman disease, multicentric related immunoblastic or plasmablastic lymphomas, and various atypical lymphoproliferative disorder. Okay, so mechanism is basically unknown, but one hypothesis says that Kaposi sarcoma virus infects lymphatic endothelial or other cells, and in concert with cytokine produced by HIV infected immune cells stimulate proliferation of vascular cells. Or genome contain homologous several genes known as do affect cellular survival and proliferation. Okay, so these all are the several genes which are responsible, but for the point here is EBV associated AIDS से associated होगा Kaposi sarcoma. Okay, about Kaposi sarcoma we have discussed in AIDS also, and we will discuss when we will talk about sarcomas. Okay, now coming to the another virus, hepatitis B and hepatitis C. So basically both viruses are responsible for hepatocellular carcinoma. ठीक है, now in this case whatever hepatitis B virus is basically of hepatovirus and very different from other DNA tumor virus. Okay, अभी तक क्या था, कुछ इंटीग्रेट हो रहा था, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा था जीन प्रोडक्ट्स का, जीन वायरस के जीन प्रोडक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, बट नाउ व्हाट हैपन, there is basically gene products is not involved, or rather it is because of chronic inflammation. Okay, inflammatory immunogenic property की वजह से हो गया. Okay, so basically inflammatory immunogenic property की वजह से you get hepatocellular carcinoma in case of hepatitis HBV. Okay, so here what happened,
And similarly in hepatitis C also, it is basically because associated with immunogenic property. Okay, basically ज़्यादातर ये immunogenic property से होता है. इसमें क्या है, basically you have a lot of chronic inflammation की वजह से cytokines and chemokines release होते हैं. Okay, now these cytokines and chemokines are responsible for bringing about changes in the genetic part, or they are responsible for the proliferation of the hepatocytes. So ये hepatocytes के proliferation कराते हैं. So now that is more important method in which this tumor is occurring. Okay, so basically this is your integration of integration या कोई viral protein उसमें जाके कुछ कर रहा है, that is not. So that is not the mechanism in case of hepatitis B virus and hepatitis C virus, which you should know it. Okay. So basically there is strong relation between HPV and HCC with hepatocellular carcinoma. There is 100-fold increase in HCC risk. 70 to 85% of HCC worldwide are due to infection with HPV and HCV. Mode of action this virus is tumorigenesis, is not fully do not encode any viral. So this does not encode any viral protein in oncoprotein. Yeah, but it is said that HBX. So direct oncoprotein HBX, they are saying that HBX is involved, but basically more of this is this viral oncoprotein encoding is not the mechanism by which they are causing hepatocellular. Oncogenetic effect of HBV and HCV are multifactorial. They are immunogenically mediated chronic inflammation. Okay, immunogenically mediated chronic inflammation are basically important thing. Okay. So basically ये cytokines and chemokines के द्वारा होता है. Okay, this will produce different mediators, those mediators, and obviously reactive oxygen species or genotoxic substances. These genotoxic substances will result into the stress of the hepatocytes, and those hepatocytes will start to obviously increase in size. Okay, and hence there will be activation of NF kappa B pathway. इसमें भी NF kappa B pathway का activation हो रहा है, and hence that is causing your what you call it, this pathway will cause the proliferation of the hepatocytes का proliferation कराता है. ठीक है, so that you need to know. So as I said, HBX or ORFX region होता है. Okay, so this in HCB core protein has been suggested to affect expression of genes that are ultimately involved in regulation of gene cycle. So the HBX protein of HBB and HCB core protein can activate a variety of signal transduction pathway that may contribute to carcinogenesis. So this is an under study, but more of it is the immunogenic chemical immunogenic reaction of your inflammation. Okay. Then now coming to the RNA tumor viruses or retroviruses. So retroviruses are different from DNA tumor viruses in that their genome is RNA, but they are similar to many DNA tumor viruses in that the genome is integrated into the host GNM. Since RNA makes up the genome of the mature virus particle, it must be copied to DNA prior to integration into the host cell chromosome. Okay, so this lifestyle goes against the central dogma of molecular biology in which the DNA is copied into RNA. So this is रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा इसमें. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज अ टिपिकल रेट्रोवायरस स्ट्रक्चर. सो बेसिकली देयर विल बी आउटर एनवेलप, many copies of envelope protein embedded in the lipid bilayer, and a capsid protein. Okay, 2 molecules of RNA and a molecule of reverse transcription is present. Okay, ये reverse transcription इनके अंदर ही होता है, and there are 2 molecule of RNA, और यही इसको RNA को DNA बनाने में हेल्प करता है. ठीक है, and there are capsid protein, gag proteins. Okay, so pole gene code for several functions. The poles, there will be pole gene. So basically products are reverse transcriptase, इंटीग्रेज एंड RNase H. सो यू जस्ट स्टडी योर बायोकेमिस्ट्री, है ना, या बायोकेमिस्ट्री का आपको इंटीग्रेट कर सकते हो. polymerase that copies RNA to the integrase integrates the viral GNM into the host genome, and RNase H, it will cleave the RNA as the DNA is transcribed, so that reverse transcriptase can make the second complementary strands of DNA. And there are proteases also which will cleave the polyproteins translated from the mRNAs from the GAG gene and the pole gene itself. It virally encoded protease is the target of a new generation of antiviral drugs. Okay, so when a retroviral infects a cell, so retroviral when is infecting a cells, its molecule of reverse transcripts are carried into the cell attached to the viral RNA molecule. The reverse transcriptase synthesized DNA copies the RNA, they enter the nucleus. Okay, so now these are very important point which you need to know in your biochemistry. So I have kept this slide so that you just can understand, have a look
आपको कैसे RNA काम कर रहा है. ओके, सो विल गो फास्ट ओवर हियर क्योंकि हमें कंप्लीट भी करना है, काफ़ी टाइम हो गया. So basically, but this is the way a retrovirus infect a slide. You can see this slide. Okay, here you have been given this slide, and obviously they will result into different capsid or formation or ribosome envelope protein or iska ye so ye these are the different ways or new variants are formed in this way. Okay, so this basically taking about reverse transcriptions. Okay, DNA host के साथ मिल जाएगा, फिर ट्रांसलेशन होगा है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को बाहर छोड़ दिया गया so that it can come again for with this new variant and again result in reverse transcription. But what is important here is basically there is oncovarinae. They have retrovirus, have a family that is oncovarinae. So basically this was the first Rous sarcoma virus which was discovered in RSV virus, which cause a slow neoplasm in the chicks. Okay, and virus in this group that cause tumor in humor are STLB1. So STLB1 is associated with, as we talked about, adult T cell leukemia, or we call it Sézary T cell leukemia. Okay, and it is found in some Japanese island, the Caribbean, and it is sexually transmitted. There is also STLB2, which is causing hairy cell leukemia. Okay, this is causing hairy cell leukemia, and it is endemic to very specific region of American, particularly in Native American population. Okay, so this you need to, this is what is more important. And there is another family that is lentivirinae. So these have a long latent period of infection before disease occur. They were mainly associated with disease of ungulates, that is example Visna virus, but HIV, formerly STLB3, which causes AIDS, belongs to this group. Okay, it is much more closely related to some lentivirinae that it is to STLB1 and STLB2. So these are basically more closely related with our oncovarinae. Okay, then there is another family that is Pumavarinae. There is no evidence of pathological effect of this virus still. Okay, so now we'll talk about STLV, so the human T cell leukemia virus. Now this is basically your RNA virus, oncogenic RNA oncogenic virus, which you need to know. So basically, and STLB1 is the only retrovirus that has been demonstrated to cause cancer in human. STLB2 also hairy cell leukemia they say, but basically here this is more important, STLB1, which will cause adult T cell leukemia and lymphoma. Okay, so ये आपका बन गया MCQ. एंड ये क्या है, इसका भी CD4 के साथ ट्रॉपिज्म होता है. ओके, एंड सो हैंस दिस इज द मेजर टारगेट इज CD4 T cells. सो ट्रांसमिशन बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड प्रोडक्ट्स और ब्रेस्ट फीडिंग. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रेस्ट फीडिंग से आता है कि नहीं आता, ठीक है. सो एंड ल्यूकेमिया डेवलप्स ओनली इन 3 to 5% ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, एंड दैट ऑल्सो विद अ लेटेंट पीरियड ऑफ 20 to 50 years, और यू कैन से 40 years मीड, कम से कम इतना तो लेटेंसी पीरियड होगा ही होगा इसमें, ठीक है. नाउ the important point is here is that ये इंटीग्रेशन होता है, लेकिन इंटीग्रेशन इज बेसिकली फिक्स इंटीग्रेशन नहीं है, एक कोई फिक्स लोकेशन नहीं है कि वहाँ पे इंटीग्रेट हमेशा उस जगह पे होता है. इट हैज़ अ रैंडम इंटीग्रेशन पॉइंट. ओके, इट हैज़ रैंडम इंटीग्रेशन पॉइंट होता है. सो द इंटीग्रेशन पॉइंट इज वेरी वेरी रैंडम, बट द इंटीग्रेशन इज क्लोनल, वो क्लोनल पैटर्न में होता है, एंड हैंस मोनोक्लोनल टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है. सो नाउ दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, यू नीड टू so this molecular mechanism, they are not so clear, but there is a unique region that is called as PX region, and this includes for tax. So ये important है, ये oncoprotein है इसका, ठीक है. tax, it is considered as, tax is considered as an oncoprotein of this cell. So this is basically initially ये क्या होता है, polyclonal T cell proliferation कराएगा, but there will be new mutations, the new mutations. So up to here, remember this is polyclonal T cells, so up to here you can basically treat this virus STLB1. okay, so up to here you can, but after polyclonal treatment there will be new mutations, and hence new mutations की वजह से then there will be monoclonal T cell leukemia. very very important, ठीक है, ये point याद रखना. Now what is here, it's encode for tax. So tax protein has been shown to be necessary and sufficient for cellular transmission by interacting, so it interacts with NF-kappa B pathway. The tax protein can transactive genes that encodes, so they will transact cytokine receptors, co-stimulatory molecules, and it will lead to autocrine signals loop and increase activation of pro-mitogenic signaling. Now what tax also do, tax also acts on cell cycle by directly binding to activating cyclins, repress the function of several tumor repressor genes, okay, like P53, and it also turns on several cytokine genes and their receptors like interleukin 2, interleukin 15,
2 hour and 15 hour. Increase production of granulocyte monocyte colony forming a stimulating factor which stimulates neighboring macrophage to produce other T cell mitogens. ओके, सो ये यहाँ पे पिक्चर में भी दे रखा है. T cells STLB1 क्या करेगा, साइटोकाइंस को एक्टिवेट कराएगा. ओके, साइटोकाइंस इस रिसेप्टर्स में आ जाता है एंड ऑल्सो इट विल स्टिमुलेट GM-CSF which will activate macrophages which will form again another T cell mitogens and that T cell mitogen again will activate the cytokines. Okay, cytokines को activate कर देगा. And there are other processes also like कि P53 को suppress कर देता है. ठीक है, suppression of P53 को suppress कर देगा and all this responsible will result into the monoclonal T cell leukomas. Okay, very much important. So basically ये अगेन वही ट्रांसडक्शन पाथवे से एक्ट करेगा. कौन से ट्रांसडक्शन, एनएफ कप्पा भी ट्रांसडक्शन पाथवे एंड दिस एनएफ कप्पा भी ट्रांसडक्शन पाथवे, ये प्रोलिफरेशन पाथवे वी नो वेरी वेल. ओके, सो नाउ दैट इज मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो. सो STLB2 दैट इज बेसिकली कॉज हैरी सेल ल्यूकेमिया, ये एक MCQ हो गया यहाँ पे. सो दिस इज इंडेमिक टू वेरी स्पेसिफिक रीजन ऑफ अमेरिका and STLB2 is close related to STLB1 sharing the same overall genetic organization and 70% homology at amino acid level. Tropic in vitro for CD8 subtype. Okay, this is tropism CD8 subtype के लिए दिखाता है. Virus was isolated one person with atypical T cell variant hairy cell leukemia. Okay, we'll talk about hairy cell leukemia when we talk about blood but convincing epidemiological data have not been found. Okay, so but still I said कि STLB2 cause hairy cell leukemia, so this can be one MCQ. So with this we conclude our today's class of viral oncogenesis. Now what you need to know one more thing, that microbial oncogenesis, there is one more thing like Helicobacter pylori. Okay, so Helicobacter pylori basically it is also responsible for causing tumor. So this is the first bacterium, you remember this your MCQ आपके पास आएगा. ये फर्स्ट बैक्टीरियम है which is bacteria, this is the first bacteria. Okay, so what you need to know, this is the first bacteria to cause basically which is responsible carcinoma. Okay, so this is basically your first bacteria, you need to remember. and ये क्या करेगा, आपका गैस्ट्रिक कार्सिनोमा कराता है और गैस्ट्रिक लिम्फोमा कराएगा. ठीक है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा एंड गैस्ट्रिक लिम्फोमा कराएगा. सो दिस आर द टू मेजर थिंग्स विच इट विल कॉज. एंड अब इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म इज अगेन सिमिलर टू दैट ऑफ योर HBV एंड HCV. ओके, सिमिलर टू HBV दैट इज इम्यूनोजेनिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन. ओके, इम्यूनोजेनिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन ये इसका मैकेनिज्म है. सो ये भी उसी की तरह करता है जैसे कि HBV और HCV करेगा. ठीक है, सो वी आर मोर अबस से ये क्या करेगा, ये भी जैसे इट विल साइटोकाइंस केमोकाइंस होते हैं. ठीक है, ये क्या करेगा, जेनोटॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं. जेनोटॉक्सिक सब्सटेंस जैसे कि अब आपका बना लेगा ये जेनोटॉक्सिक सब्सटेंस जैसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज एंड ऑल. ओके, एंड दे विल रिजल्ट इनटू व्हाट वी कॉल इट ट्यूमरोजेनिक प्रोसेस शुरू कर देंगे. ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है इसमें, दे आल्सो कंटेन गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के लिए दे आल्सो कंटेन कैग ए. ओके, तो कैग ए कंटेन करते हैं. ठीक है, कैग ए कंटेन करते हैं. दिस इज साइटोटॉक्सिक एसोसिएटेड जीन ए जीन. ओके, साइटोटॉक्सिक एसोसिएटेड ए जीन. सो कैग ए कंटेन करते हैं. सो कैग ए बेसिकली दिस इज ऑल्सो पैथोजेनिक होता है, ये पैथोजेनिक है, ये भी ट्यूमर कराने में हेल्प करता है. ठीक है, सो कैग ए दैट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट वी कॉल इट गैस्ट्रिक कार्सिनोमा एंड गैस्ट्रिक लिम्फोमा. बेसिकली गैस्ट्रिक लिम्फोमा ऑल आर ऑल्सो नोन एज व्हाट वी कॉल इट माल्टोमाज. ओके, सो दे आर माल्टोमाज भी कहते हैं इसको, माल्टोमाज. एंड दिस बेसिकली ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन टेक्निक से ही होता है. ठीक है, सो ये क्या करेगा, ये भी वही NF कप्पा बी पाथवेज को एक्टिवेट होता है. बिकॉज ऑफ दिस साइटोकाइंस NF कप्पा बी पाथवे विल बी एक्टिवेटेड एंड दिस NF कप्पा बी पाथवे विल NF कप्पा बी पाथवे विल बी एक्टिवेटेड एंड हैंस इनिशियल प्रोलिफरेशन क्या होता है इसमें H पायलोरी में, वो भी पॉलीक्लोनल होता है. ठीक है, इनिशियल प्रोलिफरेशन क्या होता है, पॉलीक्लोनल होता है. देन इट विल बी मोनोक्लोनल, यानी कि there will be more mutation here and now you need to remember that अब ये initially जब तक polyclonal है
इफ यू गिव ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स देते हो एच पाइलोरी के लिए, यू कैन ट्रीट इट, बट एज सुन एज अदर म्यूटेशंस चले गए उसके बाद इट्स बिकम्स डिफिकल्ट. ओके, it becomes difficult to treat the cancer. Okay, so this much you need to know about the H pylori. So this is about the H pylori. We'll talk about H pylori in gastric carcinomas when we will deal about the gastric carcinomas in stomach. So now what we will do, we'll start our tumor sections. So from just tomorrow we'll do some MCQs, okay, about this basic our MCQ class, and after that हम ट्यूमर सेक्शन शुरू कर देंगे. हम एक एक ऑर्गेन का ट्यूमर्स लेंगे, इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड विल जस्ट कंप्लीट ट्यूमर पूरा ही कंप्लीट कर देंगे ऐसे, ठीक है. जैसे कल आफ्टर टुमारो विल टॉक अबाउट लॉन्ग ट्यूमर्स, लंग के ट्यूमर्स के बारे में बात करेंगे, ब्रेस्ट ट्यूमर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है. फिर न्यूरोलॉजिकल ट्यूमर्स के बारे में. सो विल टॉक अबाउट ट्यूमर्स ऑफ ईच ऑर्गेन वन बाय वन. गैस्ट्रिक ट्यूमर्स सिर्फ ट्यूमर्स के बारे में. सो दैट विल वो क्योंकि हमें ईजी रहेगा ये सब ऑन्कोजीन्स एंड ऑल याद करने के लिए, और मॉलिकुलर पैथोजेनेसिस याद करने के लिए, ठीक है. रिमेंबर, मॉलिकुलर पैथोजेनेसिस से ही क्वेश्चन आ सकता है. अभी आप ट्यूमर से अगर क्वेश्चन आएगा तो मोर चांसेस दैट यू विल गेट फ्रॉम मॉलिकुलर पैथोजेनेसिस. ओके, सो विद दिस मच वी एंड आवर टुडेज क्लास. हैव अ ग्रेट डे. और हो सकता है नाउ यू कैन वॉच योर आपका IPL शुरू हो गया होगा. सॉरी फॉर द डिले, एंड हैव अ ग्रेट डे. Enjoy your class, enjoy your maths also, and study. पढ़ाई में ध्यान दो. Have a great day. You can subscribe Unacademy, and you for the subscription you can use my code Anil Live. Okay, so this will help you to get 10% discount. Have a great day. In fact, night, and study. Try to complete Neoplasia. Neoplasia को completely पढ़ने की कोशिश करो. Okay, that will help you to understand better. रॉबिन से पढ़ने की कोशिश करो एक बार, एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर.